हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और हाँ, मुझे रखना पड़ेगा स्माइल। आपको पता है यार, फुटबॉल भाई नेवर एंड्स यार, फुटबॉल नेवर एंड्स, द शो मस्ट गो ऑन। यस, नेदरलैंड्स वन ऑफ माय टीम दैट ऑब्वियसली मैं इतना क्लोजली सपोर्ट करता हूँ फॉर सो मेनी इयर्स। 8 साल वेट किया फॉर गेटिंग टू दैट पॉइंट कि भाई वी कैन गेट आउट ऑफ दिस ग्रुप इजिली आफ्टर द सेकेंड गेम। बट नहीं, आदत है टू क्रिएट ड्रामा आउट ऑफ नथिंग, and we have done yet again are we imploding in Netherlands। लेकिन टॉक अबाउट इम्प्लोजन यार, कुछ कम इम्प्लोजन होता नहीं है इंग्लैंड के स्क्वाड में, लेकिन दिस इंग्लैंड स्क्वाड इज लुकिंग लाइक अ सेट ऑफ बॉलर्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक गैरेथ साउथगेट की टीम में भाई। लेकिन यूएसए दे माइट हैव कुछ ना कुछ बोलेंगे भाई, दे से कि नहीं यार, यहाँ पर और भी है भाई। सब लोग जो है, सब लोग ये सबसे पहले बताइए कि आर यू सरप्राइज विद द नेदरलैंड्स परफॉर्मेंस, एंड लेट मी नो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इंग्लैंड यूएसए के मैच के लिए। यस, यहाँ पर थंबनेल देखकर आपने समझ में आ गया होगा आप लोग को यार, इट इज फुटबॉल वर्सेस सॉकर। फुटबॉल के बेसिकली वन ऑफ द मेन गाइज ऑब्वियसली वी ऑलवेज से हैज बीन एज एन आर्गुएबली गैरेथ साउथगेट हिमसेल्फ मिस दैट पेनल्टी 96। लेकिन उनके जो है प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग सम गुड फुटबॉल। बट कैप्टन अमेरिका क्रिश्चियन पुलिसिक, ही इज भाई एक फ्लैग बेरर आपके when it comes to soccer। और भाई सब लोग जो देख रहे हैं, अगेन डू लेट मी नो व्हाट यू ऑल थिंक। यस, स्टार्टिंग लाइनअप मैं दिखाने वाला हूं, और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी देख रहा है, सब लोग लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए स्ट्रीम। मैंने कम्युनिटी पोस्ट अभी तक नहीं किया, लेकिन इंस्टाग्राम पोस्ट किया है, तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, and we will be discussing वहां पर absolutely in future as well। तो भाई do like my Instagram post as well so that people know we are live। लेकिन ये है लाइनअप। यस, मतलब वुड यू हैव पिक द सेम साइड और नॉट भाई? 6-2 ईरान के साथ, उसके बाद में क्या ही तो आप बोलोगे, चेंज क्यों करोगे? मतलब यू कैन आर्ग्यू कि मगवायर 100% फिट शायद नहीं थे, आई डोंट नो, आप लोग बोलिए। लेकिन आई एम विशाल बोल रहे लेजेंड स्टर्लिंग स्टार्टिंग अगेन। यस ही इज एब्सोल्युटली। यहाँ पर लेट मी जस्ट टेक अ मोमेंट व्हाइल आप लोग बोलो, गोइंग बाय दिस लाइनअप टैक्टिकली क्या लगता है विच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉर ईदर ऑफ द टीम्स। भाई आ जाओ यार, यहाँ पर किधर है लोग? भाई इंग्लैंड का भी हम फॉलो कर रहे हैं काफी सालों से, आपको पता ही है। एक सेकेंड, देख रहे हैं यहाँ पर, लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट शेयर इट इन माय कम्युनिटी। चलो भाई मैंने 12 बजे बोला था, आई नो टेक्निकली, लेकिन मैंने राउंड ऑफ कर दिया था। आई एम ऑलरेडी लाइव पीपल, एंड यस, अगर आपने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन नहीं दबाया फॉर पीपल वाचिंग, डू कंसिडर हिटिंग दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंटेंट नॉन स्टॉप आ रहा है। इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। एक सेकंड दीजिए, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। ओके, इट्स फुटबॉल वर्सेस सॉकर, ठीक है? तो एक सेकंड दीजिए मुझे। फुटी वर्सेस सॉकर, हु विंस? हु विंस? आज क्या बोल रहे हो, कौन जीतेगा? फुटी वर्सेस सॉकर। चलो फॉर्म असाइड, एक होता है ना कि एक काउंटर अटैक है यूएसए की टीम में, इंग्लैंड के पास में दे हैव गुड फुटबॉलर्स, लेकिन यू ऑल नो भाई इंग्लैंड इन वर्ल्ड कप्स क्या करती है इन रीसेंट टाइम्स। तो कहीं ना कहीं यू नो वी नीड टू बेसिकली डिस्कस लॉट्स टू डिस्कस मोर अबाउट द डच टीम भी है यार। बिल्कुल, मैं वो लिख रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। ट्राइंग टू बी पॉजिटिव यार, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट यार वर्ल्ड कप में जो भी टीम है ना पहले ही पीक कर जाती है ना, दे आर नेवर गुड। नॉट दैट हम वी आर एनीवे क्लोज टू पीक, आई नो अभी भी उसी मैच में हूँ। बट इस मैच में क्या लगता है आप लोग को, हु विल बी द बिग डिफरेंस मेकर? लेट मी नो इन द चैट। और क्या लगता है गोल स्कोरर्स क्या होंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दिस टीम? हाँ, ईरान के साथ दे डिड प्ले गुड फुटबॉल। बुकायो साका और बेलिंगम, मैंने तो दोनों को डाला था, इनफैक्ट मगवायर को भी डाला था इन द टीम ऑफ द वीक। हाँ, आर्ग्यूमेंटली मगवायर नहीं होना चाहिए था बिकॉज ही वो सब्ड ऑफ, और जापान के सेंटर ऑफ बेटर थे इन माय पर्सनल ओपिनियन एज वेल। लेकिन हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बुकायो साका? मतलब क्या लगता है, मतलब इज इट फेयर फॉर हिम टू बी यू नो स्टार्टिंग अगेन, or should he have rotated fresh legs? Let me know everyone। Football 3 soccer 1, okay, interesting। भाई अगेन काफी लोग जो भी देख रहे हैं भाई हैव नॉट कमेंटेड फॉर व्हाटएवर रीजन। भाई आप कमेंट करिए, यस यू नीड टू सब्सक्राइब टू कमेंट, डजंट टेक अ बक, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली, तो डू नॉट थिंक अबाउट इट।
वी डू कंटेंट एंड टू एंड। हाँ, मैं हूँ डच फैन, मैं हूँ चेल्सी फैन, मैं हूँ मिलान फैन, बट दैट डजंट मीन मैं कंटेंट खाली उसका करूँ, ठीक है। तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, लेकिन आपको कंटेंट मिलेगा एंड टू एंड। वी हैव डन बेसिकली कवर्ड फुटबॉल फॉर द लास्ट 20+ years, इन लास्ट 1.5 years, आप सोच सकते हो। तो चेक करिएगा डेफिनेटली फॉर पीपल हु आर नॉट कमेंटिंग अपार्ट फ्रॉम विशाल। लुई वैन गाल मास्टर क्लास अगेन टुडे, साइडवेज पासिंग नॉस्टैल्जिक फॉर यूनाइटेड फैंस। ऑनेस्टली यार, एक होता है साइडवेज पासिंग, एक होता है when you have a bench and you don't play that bench. I don't know, when you have a bench you don't utilize it. आप यूटिलाइज भी कर रहे हो तो बहुत लेट कर रहे हो, और किसको ला रहे हो? ऑफ द पर्सन हु इज द ओनली पर्सन हु स्कोर अ गोल, कोडी गैक्पो। अगेन कोई रिपोर्ट्स आए हैं दैट कोडी गैक्पो विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू से एज इन इंजरीज लिस्ट। आई डोंट नो, आई होप नॉट यार, आई होप इज नॉट इंजर्ड। पता नहीं, आप लोग बोलो जो भी अभी देख रहा हो ज्वाइन करने वाला है। बट अगेन मैं यहाँ पर क्विकली टैक्टिकल एक करूंगा। लेट मी सी इफ आई कैन ऑल्सो ट्राई एंड शेयर इट इन माई ट्विटर अकाउंट। भाई मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है, भाई जो भी देख रहा है ना अभी, इट बी ग्रेट अगर आप लोग कम्युनिटी में जाकर ऑलमाइटी ब्लूज एफसी के एक लाइक बटन दबा सकते हो, एक थम्स अप बटन है बस, जस्ट लाइकिंग द स्ट्रीम। तो वो यूट्यूब बताता है दैट वी आर लाइव टू अदर्स हु मे नॉट बी हिटिंग दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। तो होपफुली आप लोग वो कर सको मेरे लिए। बट साथ साथ में आपने करना है एक इंस्टाग्राम में ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में जाकर वहां भी लाइक करना है। आई हैव जस्ट पोस्टेड अबाउट दैट एज वेल। हाँ, मैंने आज जल्दी पोस्ट नहीं किया था बिकॉज लाइक आई सेड आई वाज माई सेल्फ मच इन्वॉल्व विद द डच मैच, लेकिन मे बी दैट मींस आई शुड हैव। आज का स्कोर लाइन क्या होगा हिमांशु? अगेन मैं अभी यार यही देख रहा था द लाइनअप, एंड बाय द वे वी आर एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट इन सम टाइम पीपल। तो भाई उसी बहाने से आ जाओ यार सब लोग, अच्छा लगेगा। ज्यादा लोग आते हो तो भाई हमेशा मजा आता है, ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, पिकफोर्ड, मगवायर, स्टोन्स, शॉ और ट्रिपियर, मुझे तो लगता है बैक फाइव जो है ना ये विद राइस एंड बेलिंगम। कैन पुलिसिक राइट खेल रहा है, इंटरेस्टिंग। ओके, राइट इज प्लेइंग टुडे एंड टिमोथी विया, कैन दे? इट्स नॉट जॉश सार्जेंट यार, जॉश सार्जेंट नहीं आज, इंटरेस्टिंग। लेकिन टाइलर एडम्स है। अगेन यू कुड आर्ग्यू दैट मे बी वो खेल सकते थे एरनसन को। ब्रेंडन एरनसन क्या हो सकता था? पुलिसिक खेलते फॉल्स नाइन, और तिमोथी भी अभी खेल सकते वो। पुलिसिक कुड हैव प्लेड ऑन द राइट हैंड साइड, ब्रेंडन एरनसन कुड हैव प्लेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट खेल रहे अगेन, मैं राइट को इतना जानता नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट एरनसन आई नो, टाइलर एडम्स आई नो, मैकेनी आई नो, टिमोथी भी, जॉर्ज भी के बेटे आई नो, क्रिश्चियन पुलिसिक ऑफ कोर्स। तो ये काफी सारे अच्छे प्लेयर्स ऑन पेपर। जिमरमैन लास्ट मैच में बहुत ही गंदा पेनल्टी दिया था यार टू बेल, बहुत ही गंदा अटैक था, बहुत ही गंदा टैकल था रादर। अगेन लास्ट मैच में बात करें तो दे वर देयर इन द फर्स्ट हाफ, बहुत ही पेस है उनके टीम में, बट सेकंड हाफ में टाइटा फिश हो गया। सर्जिनो डेस्ट, यू नो दैट ही इज नॉट अ गुड डिफेंडर, गोइंग फॉरवर्ड इज नॉट टू बैड। रॉबिन्सन सिमिलर है, टिम रीम ही इज एक्चुअली डिसेंट। इंग्लैंड यूएसए, आई थिंक दे मेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राउंड ऑफ 16 दे मेट, राइट? टिम हावर्ड मेड लेंथ ऑफ सेव्स, 2010 का वर्ल्ड कप था जहां तक मुझे याद है, नहीं? राउंड ऑफ 16 आई थिंक इंग्लैंड बीट यूएसए ऑन पेनल्टीज, वाज इट? आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और वाज इट एक्स्ट्रा टाइम? लेकिन हाँ, देखिए टैक्टिकली मैं देख रहा हूँ स्टर्लिंग अगेंस्ट सर्जिनो डेस्ट डायरेक्ट होना है, ही शुड बी वेरी डायरेक्ट। Would he be able to do that considering जो फॉर्म है? आई थिंक उन्होंने अच्छा खेला था अगेंस्ट ईरान, ही टुक आउट सम नाइस स्पेसेस, वो जो गोल जो लेते थे ना, दैट लेफ्ट हाफ अटैकिंग स्पेस, सो दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग स्टर्लिंग। आज लेकिन आई फील दैट ही शुड बी टेकिंग ऑन सर्जिनो डेस्ट। सर्जिनो डेस्ट अटैक में अच्छे, तो ही शुड बेसिकली बी द अटैकर एंड सर्जिनो डेस्ट शुड डिफेंड, जो वो कंफर्टेबल नहीं होते। अगेन इट विल ड्रॉ जिमरमैन, वहां पर क्या होगा? बेलिंगम और माउंट काइंड ऑफ पीपल कैन टेक शॉट्स। So I think that will be the main tactic for England in my personal opinion. Of course, Kane also drops back. तो यहाँ वो space create होगा तो तीनों के लिए। Rice kind of sits. ये difference है versus maybe the time जब Calvin Phillips टीम में थे। बकाया साका also एक outlet है absolutely. लेकिन ट्रिपियर मैं बोलूंगा as much as इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया था लास्ट मैच में अगेंस्ट ईरान, I think ट्रिपियर you can argue did not have such a great game. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो। स्कोर लाइन मैं आऊंगा जस्ट बिफोर किक ऑफ में करता हूं यार, हिमांशु मैं करने वाला हूं स्कोर लाइन वापस। इज साका वर्थ हाइप एज एएफटीपी मेक्स? यार एंडी, इफ यू हैव वॉच्ड द चैनल, आई थिंक यू हैव, मैंने बताया दैट साका एज मच एज इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, मैं तो चाहूंगा सच अ प्लेयर एनी डे। बट साथ साथ में बाय द वे पीपल वंडरिंग मैं क्यों चेल्सी पहना आज, बिकॉज आपने थंबनेल देखा यार इसलिए पहन रहा हूं मैं चेल्सी। देखिए साका, मैंने खुद बोला है, थोड़ा सा इंग्लिश हाइप लेते हैं। एज मच एज इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग पीपल,
I'm not trying to be defensive यहाँ, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है साका कहीं ना कहीं मुझे लगता है ही शुड बी टेकिंग गेम्स बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक. आप ऐसे बोल सकते हो नहीं. सेम चीज आप बोलते हो फिल फोर्डन का, यू कैन से. तो मैं बोलूंगा आर्ग्यूबली फिल फोर्डन शुड स्टार्ट ओवर साका एंड स्टर्लिंग. मैं तो बोलूंगा हाँ, साका हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, but I'm just saying that Phil Foden probably is a better player if you really ask me. Aronson might come up, वही है पेस से आते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज. फेयर इनफ. कतार बाहर हो गई यार बिल्कुल आफ्टर नेदरलैंड्स ने एक पॉइंट लिया. डेस्ट इज इंप्रूव फ्रॉम लास्ट टाइम. वेल अगेन दो तीन परफॉर्मेंसेस अच्छे हुए एंडी, बस आई वुड नॉट टेक दैट. आई अगेन आपने देखा होगा मिलान के साथ क्या किया उन्होंने रिसेंटली. होस्ट बने घोस्ट. 2010 was football versus soccer. Yeah, 2010 it was. Yes, thanks. Pulisic should help defensively. Well, वो Tuchel के अंदर, I don't know about Potter, but Tuchel के अंदर तो वो defensively improve हुआ है काफी. I must say. नहीं, 1-1 draw, group stage था. Okay, fair enough. Saka is better than Foden. Wow, Messi. आपको लगता है Saka is better than Foden? देखिए, I know Foden doesn't start every game, तो थोड़ा सा you would say that come on, Saka starts more games, has been doing more consistently, but let's be honest, अगर फोर्डन आर्सेनल में होते तो आई थिंक यू वुड हैव स्टार्टेड ओवर साका ब्रो. ऑन फॉर्म, मतलब मार्टिनेली वुड हैव प्ले लेफ्ट विंग एंड साका वुड हैव स्टार्टेड, और अदर दोनों ही शुरू करते. मैं अगेन मैं बोल रहा हूं साका बुरे प्लेयर नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग. आई एम जस्ट सेइंग दैट अगेन लोग कंपेयर करें फोर्डन और माउंट. फोर्डन माउंट बहुत अलग प्लेयर्स यार. आई वुड कंपेयर फोर्डन एंड साका टू बी वेरी ऑनेस्ट. Let me actually put on my earphones because Chinmay I think is waiting in the background. भाई अगेन भाई सब लोग जो भी है लाइक कर दीजिए. मैंने पोस्ट किया है ऑन इंस्टाग्राम, मैंने ट्विटर में पोस्ट भी किया है. ऑटोमेटिकली जाती है एक ट्वीट जाती है, तो सब लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन सो दैट वी हैव मोर पीपल. मजा आएगा यार. चिन्मय को ऐड कर देते हैं मीनवाइल. चिन्मय क्या हाल है? Good evening, sir. Going into the round of 16 with a win tonight. बस ये हाल है. हाँ यार, इंग्लैंड का वो सीन एक्चुअली है. दैट्स राइट. हम देख ही लेते हैं थोड़ा सा, हम लाइनअप तो देखे थे, बट क्विकली भाई पीपल जो भी देख रहे हैं ना यहाँ पर, बाय द वे बिग अप टू चिन्मय फॉर कमिंग सो लेट. आई नो इट्स लेट एंड चिन्मय हैड अ लॉन्ग डे, फिर भी चिन्मय इज हियर एज ऑलवेज. व्हेन England वी fans, it's coming home. किसी को तो बोलना पड़ेगा. It's coming home, and let's hope this year is the year. भाई नेदरलैंड्स ने तो हगा यार, मेरा टीम ने तो हगा है अभी आकर. बट एनीवे वी विल टॉक अबाउट दैट इन बिटवीन. अभी यार टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप ना, लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्रुप. देखिए इंग्लैंड का है अभी 3 पॉइंट्स ऑब्वियसली विद अ मैसिव गोल डिफरेंस. नाउ इफ दे बीट यूएसए दे विल बी ऑन 6 पॉइंट्स, यूएसए विल बी स्टे ऑन 1. तो लिटरली क्या है ना, यूएसए वर्सेस वेल्स, नो सॉरी यूएसए वर्सेस ईरान, एक जो भी जीतेगा वो ही इज गोइंग, दैट टीम इज गोइंग राइट अलोंग विद इंग्लैंड. That team is going. I think England win today. England is confirmed to not win obviously, but England is confirmed to go on ahead. And then you hope that Argentina win tomorrow, because the top the top team of this group plays the second place of the Argentina group. So then you might get Netherlands यार. Let's hope. देखते हैं अभी. Let's hope. You're hoping on Netherlands यार. I'm telling you, Louis van Gaal can. Netherlands. The thing with Netherlands is, I'm scared a little bit of Van Dijk. I'm scared a little bit of Van Gaal. But with Argentina, तो बात ऐसी है, Maguire versus Stones and Messi. Messi versus Maguire and Stones. Wo battle, I don't think it is not going to work out well in England's favor. So I just hope anyone but Argentina or Portugal. Portugal, we can't get because of the group, the way the things have been divided. But I feel if we avoid Argentina early on in round of 16, it would be better for England. Okay, interesting. Let's see, bhai. As always, everyone definitely, as in playing down Netherlands' chances. Jo on performance, I would not say no. I would not disagree. I would agree rather, right? As English, bhai, is Shaw underrated? पहले पूछ रहे थे पुदिन भाई. Shaw का क्या रिपोर्ट है यार recent Manchester United से? Shaw lost his place in the beginning, got his place back during the end of the mid-season break, and I think he's been in good form now. For England, I don't think he's put a step wrong whenever he's been selected. Acha assist bhi tha for I think Bellingham's first goal. And again, I think with England, the United players that are Rashford, Maguire and Shaw, whatever their form is for the club, for England they've always performed. Biggest example is the Euros last year. So I really think, in terms of that, Shaw underrated, I wouldn't say, but I would say, Shaw is doing quite well at left back. You wouldn't really look to replace him.
बिल्कुल आई हियर यू. साका इज बेटर इन इंग्लैंड स्क्वाड दैन फोर्डन. यार यही बात कर लेते भाई. पहले एक्चुअली बिफोर दैट पुदिन, मैं क्योंकि चिन्मय अभी आया ना, लाइनअप पर थोड़ा बात ही कर ले. आई नो थोड़ा सेम है फॉर्म. डेफिनेटली इंग्लैंड इज द फॉर्म टीम अलोंग विद स्पेन. And आर्ग्युबली tracking back. स्पेन, इंग्लैंड और ब्राजील हैव लुक द बेस्ट. और यू कैन इवन आर्ग्यू मे बी इवन फ्रांस, यू नो, these four have looked the best honestly अभी तक, right? Yeah, Saudi, why not Saudi? But this particular team, yeah, if you are Southgate, are you kind of convinced that this team can win you the cup? Matlab, or do you would like to see one or two tweaks abhi bhi? Why not? Why not? Because I think the best thing about a champion team is bench strength, and the whole team is stacked. If Saka is having an off day, I think one big thing about Saka people don't look at is the way he tracks back. He started off as a wing back earlier with Arsenal. With England too, he's played at wing back. The way he tracks back, Foden will not give you that always. Foden is a player who loves to stay up top. So with Saka, हम्म. you get a little bit of defensive ability too, and he's given you two हाँ, goals वो on विंग बैक भी खेला हुआ है बहुत, right? As in, it's not, we yeah, forget that and at he's times. given you two goals on his debut. With England and the World Cup debut. I think Saka scored two. I'm not wrong, or if Yeah, Bellingham. I'm he not sure. scored two. He Yeah, scored I two. think yeah, Saka scored two. Definitely Yeah, scored two. and I think with all of that, Rashford came on. Callum Wilson is on the bench. Foden's on the bench. There are so many players who can change the game. Grealish, Gallagher. Yeah, I think yeah. 2010 we had a one-all draw. I remember. हम्म. हाँ, मुझे पता नहीं क्यों वो ये टिम हावर्ड वाला वो वाला मैच है ना. टिम हावर्ड वाज मैडनेस. Yeah, and the keeper Rob Green, I think he had a howler. It slipped through his hands if I'm not wrong. याद आया अभी. So I don't know for whatever reason I thought it was round of 16. नहीं क्या? It was a good group no, match. it Okay. was a group stage game. अच्छा, फेयर इनफ. Round भाई of शॉ इन 16 यूरोज was फॉर्म, मतलब Germany got मतलब us. वही है. So शॉ का यूरो फाइनल में आपको याद है भाई पहले ही मिनट में क्या हुआ था. बट एनीवे विल कम टू मेमोरीज वेल. यार मेसी इज गुड. मैं अर्जेंटीना का मेक्सिको बारे में बात करेंगे एज मच एज पॉसिबल इन बिटवीन. द आइडिया इज वी ट्राई एंड कीप द फोकस टू द डेज गेम्स एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम वी टॉक अबाउट नेक्स्ट डेज गेम्स. लेकिन हाँ मेसी, मैं बोलूंगा क्विकली, मुझे लग रहा है, मेरा गट फीलिंग दैट अर्जेंटीना इज गोइंग टू विन दैट मैच. एंड अर्जेंटीना विल, यार दो लगातार मैचेस दे कैन नॉट डू व्हाट दे डिड अगेंस्ट साउदी. आई थिंक मेक्सिको देमसेल्व्स हैव नॉट बीन द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉर्म्स, सच में बोलूं तो. याद रखिए वहां से कनाडा have are coming with better form, in North America. And again they are having a lot of leggy players because they are in their latter 30s, a couple of them at least. Chalo, on basis of football terms, Greenwood was better than Saka according to me. On football terms only, if you're talking only for, he was a different player. Greenwood was a striker they were, who could play the they were wing, no? different. Greenwood was Yeah. always going to be a number 9, and I feel it is best we don't mention his name after whatever has Correct, happened. actually. Yeah, I think you're yeah, right. we बिल्कुल should बिल्कुल. not be mentioning Mason हाँ. Greenwood's name. स्टर्लिंग पर And आ जाते हैं. स्टर्लिंग, आई नो काफी लोग बोलेंगे स्टर्लिंग का भी नेम मेंशन नहीं करना चाहिए विद द फॉर्म. बट ऑनेस्टली लास्ट मैच में एक्चुअली ही डिड मच बेटर बिकॉज़ पॉटर उसको विंग बैक बना रहा है इन सम मैचेस. यू मस्ट हैव सीन इन चेल्सी. तो yeah, कहीं ना yeah, कहीं आई yeah. थिंक स्टर्लिंग फॉर इंग्लैंड इट वर्क्स ब्रो. आई डोंट नो I विद think शॉ I मे बी. think the best thing about this England squad जो बहुत लोग नहीं देख रहे हैं अंकित सर, lot of people are not looking at this factors. ये same to same squad 2018 World Cup खेला है, most part of the squad 2021 के Euros भी खेला था. बस 3-4 new faces होंगे. Apart from that, it's the same team 2018 से. They've started a journey together. Whatever said and done, even the biggest example is Maguire. He has not played anything for Manchester United. He has been benched for the whole season, yet he comes here as a definite starter. And look at his performance. It was I know they conceded 2 goals, but it was a good performance by the defenders, I would say at least. And the thing is, a sense of confidence hai. Everybody plays for each other. There is no more club rivalry. I saw the minute Rashford scored, the first minute to congratulate him was, I think, Grealish, if I'm not wrong. Tells you, it smells of team spirit. And I think, yeah, Sterling के लिए भी वो matter करता है. Sterling loves Southgate. Sterling loves England. And well, it is turning out. He's always been a star for England. He is turning up again. Yeah. By the way, Adesh, not only was he a Ballon d'Or winner, George Weah, Timothy Weah's father, right? So he was basically an ex-Chelsea man also. He was on loan on Chelsea. So, there is a soft corner for him, you can say, or even Pulisic, you can say. मतलब इसलिए I'm wearing the Chelsea jersey for everyone wondering कि यार आज क्लब फुटबॉल तो है नहीं, आप चेल्सी क्यों पहन रहे हो भाई? मेसन माउंट खेल रहे हैं, स्टर्लिंग खेल रहे हैं, पुलिसिक खेल रहे हैं, तिमोथी विया, son of George Weah playing.
एंड एम आई मिसिंग यार गैलेगर. मतलब यहाँ पर थोड़ा स्क्वाड की बात कर लेते हैं यार. आई नो पीपल मेंशनिंग द डच परफॉर्मेंस, पीपल आस्किंग अबाउट अर्जेंटीना. हम आएंगे as soon as basically the match starts and there's a moment to talk about it, as much as even before होगा हम आएंगे भाई. सब लोग लेकिन लाइक कर दीजिए, स्ट्रीम शेयर कर दीजिए. लेकिन चिन्मय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगेन आई अग्री दैट आपने जो बोला दैट अबाउट द सेटअप व्हेन यू आर विनिंग व्हाई चेंज वाला जो स्पेन का मामला है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट इफ यू हैविंग अ हाई एनर्जी प्लेयर लाइक अ गैलेगर वर्सेस समवन हु हैज बीन क्रिटिसाइज्ड लॉर्ड्स माउंट, व्हिच आई डोंट अग्री विद. लेकिन मे बी एक होता है ना, और आपको याद हो तो लास्ट वर्ल्ड कप में व्हाट हैपेंड, रिमेंबर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वाज अ मैच जहां पर लॉफ्टस चीक वाज इन द स्क्वाड एंड ही प्लेड. ठीक है, देयर वाज सम रोटेशन इन बिटवीन. I think 6-1 वाला मैच था पनामा के हाँ, he started. So I think Southgate actually managed that squad better in that World Cup. I personally felt that आज थोड़ा सा rotation करेगा because of the fact that you expect as much as yes England ने बहुत बार disappoint किया है, but times have changed. I feel that you expect this England team to at least reach the quarters. I do at least. So I think because of the last two tournaments, you Mhm. expect of now again the expectations have started. Previously it was like England, they're going to win one game or two games, then they're going to go off. Now expectations have started coming back. Even the ex players have started rooted, Beckham, Rooney, they've started talking very publicly about we want to see the team go ahead. I think you're right about the way he's managed the squad, but Mount, number one, again, he's one of those players who would run for the team. He would kill for the team. He's one of those players who would do a lot of stuff. Technically, too, Mason Mount is gifted. I would say that, and I think running wise, well, that comment is quite यहाँ पर weird. मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी फैन तो हंसेंगे भाई, लिवरपूल फैन देखकर बोले यार भाई याद क्यों दिला रहे हैं. बट टू बी फेयर, लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस आल्सो काइंड ऑफ agree that Gerrard and Lampard weren't played rightly because they didn't play Hargreaves. But anyway, that's for another day. लेकिन talking about squad यार, मतलब I know golden boot and all that we can talk within absolutely. लेकिन I don't know यार, all of a sudden मैं थोड़ा सा नेदरलैंड्स वाले मैच में अभी तक हूँ. एनर वेलेंसिया थोड़ा लास्ट में इंजर्ड लग रहे थे, बट are you seeing ये this is a tournament where you have this Ecuador of the likes or someone like a Senegal suddenly bursting? Matlab, are you no, I seeing mean, this as one of those tournaments? you've seen even Saudi, Japan. Yeah, you have a look at Japan. Japan. You have a look at Saudi. These last tournament maybe they were upsets. Last tournament में Sweden nearly got a 1-all, with Germany when Toni Kroos gave his magic, and Mexico did beat Germany. There were a lot of upsets, yes, but already at the beginning of the tournament, day 2, day 3, we weren't seeing upsets last time round. I remember Argentina suffered a 1-all with Iceland, but Iceland also after 2016 had become kind of a known name. Chalo. But I think this time round, the surprising factor is there. I think, a lot of people were criticizing the World Cup for a lot of, numerous seasons. But footballing wise, I would say the first week has been quite entertaining because, Argentina, number one, Germany. There have been so many big teams, historic teams, who you expect to, come out thrashing. People said the Messi was going to score 4 or 5 against Saudi. He didn't do anything. I mean, it was a big surprise for me. Good footballing battle going on today too. You see Netherlands. I actually thought Netherlands would have won the game. Netherlands would have, when they scored that early, Gakpo. I thought, well, it could be a rout, but Ecuador, came back. Big up to them. Rather, Biggest it was a bit of both. Yeah, it was a bit of both. Portugal का match देख लो. Not for 1 second was Portugal assured that they were going to win the game. Till the last second they were, it was looking Let's like a see यार, 3-0. मतलब I know थोड़ा सा conditions भी है, थोड़ा सा mid season में हो रहा है, थोड़ा lot of changes are coming. Again, I would मतलब like I famously said, a lot of times, famously because it has been, one of the things जो हर एक stream में बोल रहा हूँ. देखिए, when you want to win a World Cup ना, for all the favorites ये बोल रहा हूँ भाई, आप लोग सुन जाओ, ध्यान से सुनो, सब लोग, you don't win the World Cup when you peak early. बहुत ही कम होता है when you peak early that you win the World Cup. And that is a thing somewhere down the line. I think Argentina, even the Netherlands, I would say, I know that I'm not putting them as favorites, but at least मैं expect करूंगा भाई, Netherlands, England, Portugal, Argentina, Brazil, France, कौन सा मिस कर दिया भाई, ये 7-8 टीम क्वार्टर्स में मैं देखना चाहता हूँ आइडियली. Portugal. स्पेन ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स. तो ये 8 टीम मैं बोलूंगा मैं. और बाय द वे चिन्मय, यहाँ पर पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आपने देखा है ना मेरा प्रेडिक्शन, देखा है? हैव यू सीन माय प्रेडिक्शन About वर्ल्ड कप? Portugal? हाँ हाँ. I haven't caught on. I'm very sorry. Your prediction for the कोई World Cup नहीं, is? कोई नहीं, ये इनफेमस. तो आई एम कॉलिंग फॉर, नॉट दैट आई वांट, लेकिन आई एम कॉलिंग फॉर पोर्चुगल टू विन द वर्ल्ड कप एंड बीट ब्राजील इन द फाइनल.
और इंग्लैंड टू कम थर्ड, ये है मेरा प्रेडिक्शन। I would be happy with that. Honestly, I would be very happy with it. England जस्ट will have बिकॉज a good. रोनाल्डो। Yeah, I mean, England would have a good successful tournament with third. दोगलापन 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 दोगलापन। Honestly, not even joking. I would want, if not England, one of Messi or Ronaldo. I think they deserve it for football, for footballing good, for whatever they've given to the game. I feel one of those should deserve it. नहीं, आई हैव टू एग्री विद दैट, आई हैव टू एग्री, क्योंकि यू सी लेटर ऑन ना कि यार काश वो होता। वो डिबेट हमेशा चलते आएगा यार, मैराडोना मेसी रोनाल्डो पेले वाला, कि यार दो दैट डुओ वाज बेटर इन टर्म्स ऑफ गोट्स फॉर दिस डुओ, बट ऑनेस्टली यू कैन नॉट कंपेयर। लेकिन वही है, इफ ही विंस द वर्ल्ड कप, मेसी और इवन रोनाल्डो, you would argue that why not, as in they are right up there, as in there's no Why argument not even. actually? Because you have a look, वो generation और इस generation में everything is kind of similar, I would say. But the only fact is the two big things they had, Pele and Maradona, they won the World Cup. And here, Ronaldo and Messi have done everything. Goals, different level. Assists, different level. Games, different level. Years, 20 years, okay. But they don't have the World Cup yet. अरे भाई सब लोग अगेन, मैंने कमेंट्स आई नो मिस कर दिया है थोड़ा, हम लेंगे साथ साथ में, भागे मत। आई विल बी टेकिंग द कमेंट्स। अब आप कमेंट करके अगर चल जाते हो ना, तब यार नो पॉइंट राइट, तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। इट्स अ कॉन्वर्सेशन। मच लव टू एवरीवन जॉइनिंग अगेन। होपफुली भाई सब लोग जो भी जुड़े, सब लोग लाइक कर दे स्ट्रीम, सर्टेनली अगर आप शेयर कर सके तो और भी बढ़िया यार, ऑन ऑल द चैनल्स। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है, इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला है, और चिन्मय का मैंने लिंक डालना है इंस्टाग्राम का, आई हैव डेफिनेटली मेंशन हिम इन द डिस्क्रिप्शन। भाई चिन्मय अगेन फॉर पीपल जो नया है एंड यू नॉट वॉच चिन्मय, ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट ही इज डाउन एंड आउट इंग्लैंड फैन प्रॉपर यार। तो आई ऑब्वियसली हैड टू गेट हिम ऑन फॉर इंग्लैंड मैच, तो फॉर श्योर। मेरे चिन्मय से क्वेश्चन है कि ट्रिपियर और वॉकर ज्यादा जल्दी इंजर हो सकता है, तो ज्यादा प्रेशर ट्रेंट पे आएगा नहीं, या फिर साउथगेट सोच रहा है कि खेलने वाला तो ट्रेंट है, लेट्स प्ले। आई डोंट नो, मतलब शुड ही, भाई वही रोटेशन की बात आ गई ना कहीं, दैट व्हाट आशीष इज सेइंग, दैट शुडंट ट्रेंट बी रेडी टू प्ले। मुझे काफी याद है ये, बहुत ही, क्योंकि बहुत लोगों को याद होगा, इफ यू बीन सपोर्टिंग इंग्लैंड ऑफ कोर्स, इंग्लैंड ने पहले 2 मैचेस में ही सिक्योर कर लिया था क्वालिफिकेशन विद द 2-1 एंड 6-1 विन लास्ट वर्ल्ड कप आल्सो। बेल्जियम के अगेंस्ट a completely different change. We lost the game 1-0, I remember. Januzaj scored, but a completely different 11 played. I think इस बार भी वही होगा. Just win the game. Next team you will see, I think maybe even the whole 11 gets changed. पूरा rotation हो जाएगा. Get the squad mentally ready for the knockout games. जो हो सकता है, it's a World Cup, होता ही है. It is an advantage of winning, early or winning by a huge margin. Once you start doing that, you can rest your players for the big game. Right. Who would play if Kane gets injured? Again, squad में देख लेते हैं. Wilson could. Rashford has been playing up top for Eric Ten Hag. You could go with a false 9. Foden has done it before for City. There are a lot of options if Kane gets injured. I think Wilson is the in-form player, right? So Kane does not get injured. Yeah, that's the best case. Obviously, यार slightly injured लग रहा था last match में, but clear कर दिया गया, and that's why he's playing obviously. Okay, Spain बोल रहे हैं, who ये तो ले लिया था हमने. Ronaldo did sue in front of Messi and Bakri did sue in front of Ronaldo. अरे कुछ भी. If one of them CR7 or Messi wins, then one has to suffer, including fan base. I badly want Portugal to win, but if England wins, I'll be happy. Okay, that's a good way of looking at it as well. I will tell you one thing though: if England wins, football community will not be happy. Football community will hate it. England is like South Africa of cricket. Anyone can win. The minute England wins the World Cup, football breaks. नेदरलैंड्स तो और भी बुरी यार, दोनों ही टीम ऐसी है, मैं बोल रहा हूँ. England wins. नहीं, आई हियर यू ऑनेस्टली, लेकिन सच में बोलूं तो एज मच एज साउथगेट इज फ्रॉड, और उस समय क्या मैं खुद ही बोला था यार इन द पास्ट, द रियलिटी इज दैट द गाय हैज गॉट यू रिजल्ट्स एटलीस्ट. हाँ, थोड़ा सा ड्रॉज आल्सो काइंड ऑफ मैटर्स, होम यू मीट इन द राउंड ऑफ 16, आपका जो टेबल हमने दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट साउथगेट को it's because of his football that people are criticized so much. Results के लिए I don't think you can criticize him, can you? मतलब did you expect to win the Euros really? हाँ, मतलब as an England fan to you. I remember at the start I remember saying this. I said semis, yeah, final, I'd be very happy. Luckily, somehow my prediction turned out right. We did get to the final. I feel at some point of time we've got to the semis, we've got to the final. One hurdle left. हाँ, लोग बोलेंगे that we had a easier draw in both of those tournaments. But now maybe it's time to play the big guns. Last tournament, whatever said and done, we did get through Germany. I know not a full-fledged Germany, but we did get through Germany. Why not, take on the big guns this round?
we have to prove ourselves on the big stage. Why not go for it? And I think, Any fair Southgate, enough. I very well remember. I very well remember. 2 months ago, England was not performing well at all. I remember we lost so many games, and there was only one thing said: wait for the World Cup. And all of this defensive football people are criticizing 6-2. 6-2. The Premier League's Hmm. best players, maybe not the best at their positions, but at least they're gelling together. And Bellingham, for that matter, the only non-Premier League I think player right now, and they're gelling together and giving us results. I think it's happy enough for Southgate. Oh wow, Matata United, this is very very strong, huh? But anyway, भाई again हमने थोड़ा यूएसए का भी बात करना है, तो आई अगेन शो यू द लाइनअप. भाई 3 मिनट बाकी है. सब लोग प्रेडिक्शन हो जाए, स्कोर प्रेडिक्शन इन द चैट. सब लोग प्रेडिक्शन कर दीजिए. व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? अगेन बेंच हमने दिखाया था, जॉर्ज सार्जेंट स्टार्टिंग ऑन द बेंच, जियोवानी रेन ऑन द बेंच, तो दे हैव अ डिसेंट बेंच आज. एरनसन ऑफ कोर्स हमने देखा है लीड्स के लिए खेलते हैं, काफी अच्छे प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा पेसी और ट्रिकरीज रखते हैं ऑन द विंग. स्पेशली लास्ट सीजन हमने देखा था, आई थिंक वाज विद सॉल्सबर्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दे डिड प्रीटी वेल अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. एंड बट स्टार्ट कर रहे हैं भाई तिमोथी विया. और भाई टाटा यूनाइटेड को बिग अप यार. आई सॉ दैट यू हैव अ पिक विद जॉर्ज विया, इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट दैट. Yes, he's. I think he's one of the primes of Liberia. So that's George Weah again. He was even the ex-Chelsea player on loan. McKennie, Tyler Adams, Pulisic, Weah. I think these four guys are very very crucial. यहाँ पे मैं बोलूंगा ना, चिन्मय and everyone watching, आप लोग बोलो if you disagree. That's Serginho Dest. Arguably, I would say that yes, I think DeAndre Edlin, आपको याद है भाई, Tottenham fans might remember him. The guy actually is on this day, or I know strong statement है, I think he's as good as Dest. Dest defensively is very weak. मुझे लग रहा था इस गेम के लिए maybe Edlin has more physicality, तो he might play because you have a Luke Shaw and a Sterling on form. And again, बहुत अच्छी point बोली थी चिन्मय ने about Mason Mount, that yes, he does a lot of dirty work because of which Bellingham can step in. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर जिमरमैन विल हैव अ कॉन्ट्ररी की कहाँ से किस साइड जाऊँ मैं. इसीलिए लास्ट मैच में भी उन्होंने पेनल्टी दी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही टैक्टिक रहेगा, दैट दे हैव टू नॉट क्रिएट दैट गैप बिटवीन डेस्ट एंड जिमरमैन इसमें. और वहां पर मैकेनी माइट बी हेल्पिंग हिम. सो इज देयर इनफ अटैक? आई डोंट नो. मे बी दे हैव अ लॉन्ग पास जो टिमरिम रखते हैं, और डायगोनल पास करेंगे विया को या पुलिसिक को, एंड दैट माइट बी वर्क फॉर देम. लेकिन हाँ, प्रीटी श्योर वो काउंटर करेंगे एंड दे विल प्रेस because there are a lot of Leeds players as well. 3-0 England win बोल रहे हैं. Ashish, let's have a British media. No one's chanting it's coming home this year. That's actually good for them, honestly. नहीं Yeah. जिनमें England 2-0 in the wow देखते हैं भाई. I am actually going for a USA goal at least. Let's go with a 3-1. 3-1 होगा. I take 3-1. anything, any win, any way we win, I'm happy. बस हो जाओ. ये क्या है? Aaron Ramsey goal curse. He scored before Queen Elizabeth's death. Oh my God, really? Ramsey का है वैसे goal curse, death curse, That's but interesting. I didn't know Okay. about scoring before Queen Elizabeth. एक सेकंड यहाँ पर मैं, अरे दे टेकिंग द नी ब्रो, अगेन डबल स्टैंडर्ड्स. भाई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम नहीं लेती है, फुटबॉल टीम खाली क्यों ले रही है? एनीवे, इट्स आर्ग्यूएबल एट बेस्ट. शुरू हो गया यार पीपल. भाई इट हैज स्टार्टेड. एवरीवन, भाई थिंग्स हैव स्टार्टेड. तो भाई 3-1. चिन्मय आप क्या स्कोर रहने गए? 4-1 I think. 4-1 at 4-1. the चलो इट्स अ प्रेडिक्शन, लेट्स सी. एंड हु, भाई मैं तो स्कोर प्रेडिक्शंस भी कर दिया था, मतलब हु स्कोरिंग एक्सेट्रा लास्ट 2 दिन में. इतना तो मैं, जोहेब सेइंग 100 भाई, जोहेब का कमेंट अच्छा था भाई. आई डोंट लाइक इंग्लैंड और यूएसए इफ आई एम नॉट रॉन्ग जोहेब, लेकिन आपने बोला था दैट बट फुटबॉल इट इज यार, बिकॉज दे कॉल इट फुटबॉल, आई विल गो विद इंग्लैंड. भाई आई हैव एक्चुअली लिव्ड फॉर अ फ्यू इयर्स इन द कंट्री, वहां पर सॉकर बुलाते थे यार. मैं हमेशा फुटबॉल बोलता था, हमेशा मुझे रिपीट करना चाहिए था, रिपीट करना चाहता था यार, दैट सॉकर कैसा भी बोलो. देखो, कम ऑन 100 ब्रो. nil नहीं होगा. 100 nil तो नहीं होगा वैसे, बट लेट्स होप उसके थोड़ा पास भी आ पाए तो अच्छा होगा. ड्रॉ लेकिन देवानी का अच्छा लग रहा है यार. मतलब अगेन, अगर नेदरलैंड्स कर सकते तो व्हाई नॉट इंग्लैंड आफ्टर बेसिकली अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट ईरान. एंड बाय द वे ईरान ने यार, पता नहीं चिन्मय, इफ यू गॉट अ चांस टू सी दैट सेकंड हाफ परफॉर्मेंस, मैन, ईरान No, साथ में ग्रुप. I missed that game. I missed that game, unfortunately. यू शुड सी But दैट भाई, ऑफसाइड लगा ये. I saw the highlights. I saw Twitter exploding, and I saw Wayne Hennessy being sent off, and then, well, I think 98th and 101st minute. And the irony क्या है बोलूं, Wayne Hennessy is the second choice for Nottingham Forest, whereas Danny Ward is the starter for Leicester. Now that he's great,
Just saying. And he started Euros as well, Danny Ward. But वो इंजरी के कारण हुआ था यूरोज में भी. आई थिंक स्टार्टेड बिकॉज ऑफ वेन एंडरसन नॉट बीइंग अवेलेबल. आई रिमेंबर दैट. अरे बिल्कुल आदेश भाई, यहाँ पर मैं तो अभी भी यार उसी मोड में हूँ दैट नेदरलैंड्स ने इतना हगा कैसे आज भाई. जो भी लोग थे उस स्ट्रीम में बता दीजिए यार, लुई वैन गाल क्या फूक के बैठा था भाई. ही टुक ऑफ गैकपो ब्रो, एज इन does he have an injury or what? I'm still wondering why would you take off a guy who's the only guy who looks like a goal scorer. Let's see if Southgate does something like that. Okay, USA कोच को बहुत हेट मिला यार गेटिंग इनटू द क्वालिफायर्स इन द वर्ल्ड कप. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूएसए क्राउड इतना इंप्रेस नहीं है विद दिस गाय. I don't know if anyone is a USA fan in the chat. Do let me know if anyone is watching from USA or Canada. Canada, I'm assuming couple of people तो होंगे यार. People who might be knowing from me from the past. नहीं. हाँ भाई, that will be a 6 pointer. जो भी जीता ना इस थ्रू. आशीष. Qatar Assuming became England wins. two. We knocked out today officially. Qatar ना. Yeah. We Netherlands को, if Netherlands would have not lost, they would have been knocked out, and that's what happened. I don't know, people, are you able to hear the volume fine? Am I don't know if Chinmay is breaking up for me only or is it for everyone? सब लोग थोड़ा बताइए. थोड़ा सा Chinmay is breaking up. I don't know if it's the volume. I can hear you How quite you properly. how you become fan of Netherlands, अंकित भाई? देखो यार, ऐसा है ना, इंडिया तो वर्ल्ड कप में थी नहीं, ठीक है. एक और हम फुटबॉल शुरू किए थे. मैं शुरू किया था, मेरा पहला मैच था 94 वर्ल्ड कप. लिटरली बच्चा ही था, उस समय कितने साल का होगा. एंड आई नो यू कैन कैलकुलेट माय एज विद दैट फाइनली. तो मैं था उस समय भाई 8 साल का था मैं. 8 साल नहीं, 8 into the 8th year. I was 7 years old and getting into the 8th year when I was basically 94 का वर्ल्ड कप में, ठीक है. और उस समय मुझे याद है दैट अ यंग बर्गकैम्प had burst through. They had Ruud Gullit, जो इतना सारा हाइप था because of obviously the Ruud Gullit phenomenon. यहाँ पर अटैक हुआ है आई बिलीव रॉबिन्सन का, लेकिन आई थिंक थ्रो इन है. बट हाँ, तो ये इतना हाइप अप हो गया था, तो दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स नेदरलैंड्स, क्योंकि यार 88 में दे वन द यूरोज एंड देन आफ्टर दैट वेयर, ठीक है. और ये टीम खई मची थी. ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड कप ही वॉकड आउट. कैप्टन था भाई, डिक एडवोकेट के साथ ही वॉकड आउट. एंड देन फिर भी यार आई लाइक ठीक है फाइन, न्यूज आ गया था वो सब. आई वाज एक्चुअली न्यूज़पेपर एट बेस्ट, राइट. देन मैच केम एंड आई थिंक राउंड ऑफ 16 हुआ था, जहां तक मुझे याद है. अर्जेंटीना के साथ में 3-2 क्रेजी मैच हुआ था. देन नेदरलैंड्स बीट देम इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देन ब्राजील के साथ था, दे लॉस्ट and Brazil went through and they went on to win. Baggio जो missed a penalty, that was a huge thing in that particular tournament. But Netherlands का continue इसलिए हुआ because then Ruud Gullit was also in Chelsea and कहीं ना कहीं मुझे लगता था यार अंडरडॉग्स को बैक करना चाहिए. And that's how it started. थोड़ा बहुत, I would not claim that उस समय मैं देखता था every match, hardly every match आता था, only major tournaments used to come. But then came the 98 World Cup, वहाँ जहाँ पर Netherlands again did well. And then later on, Netherlands ki couple of players were in Chelsea. In early 2000s, you had Robin. Of course, people might remember Robin are absolutely like yesterday. He was my all-time best player. So I kind of became from like just a supporter of Netherlands to a fan. धीरे धीरे. I just like their players. एक करिश्मा भी हमेशा हुआ करता था. Some drama जैसे चेल्सी का भी था around the same time. चिन्मय की क्लियर नहीं है भाई. चिन्मय आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बोल रहे जोएब. I don't know. Do you have earphones or something? Maybe it'll help sometimes in case you do. I will नहीं तो try. हाँ, आप क्या कर सकते हो ना, मे बी यू नीड टू स्पीक लाउडली एंड रिड्यूस योर वॉल्यूम अगर आप स्पीकर में बात कर रहे हो. Yeah, I think okay. I'll try that. Wait. मतलब थोड़ा सा लाउडली, मतलब नॉट इफ हो सके तो. Okay. लेकिन हाँ, Is this good? लेकिन वॉल्यूम Good. कम रखो आपका इन टर्म्स ऑफ द स्पीकर. Is this good? आशीष लेकिन बोल रहे अच्छा है. चलो, तो आई थिंक इट्स गुड. भाई क्या लग रहा है अर्ली मिनट्स में चिन्मय? यूएसए आर एक्चुअली डोमिनेटिंग मैन. व्हाट इज हैपनिंग? Let's see. I'm not going to comment on anything. I'm just. अरे भाई कमेंट करने के लिए तो आए हो आप. इस बार थोड़ा नॉर्मल न्यूट्रल स्टांस लेंगे. एंड आई थिंक आई जस्ट होप ऑनेस्टली इंग्लैंड का ऐसा ही रहे हर बार. वी हैव dominated games and next games we've gone ahead and just decided not to play well. So I hope, okay, you can see the dirty work I was talking about. You can see the dirty Mason Mount. He's everywhere.
यार लोगों को चाहिए स्टैट्स यार, मैं बोल रहा हूँ ना, और ऐसा कोई स्टैट है नहीं ना जो विल गेट इट। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि यार ये बहुत ही मतलब Balotelli वर्ल्ड has क्लास प्लेयर one है। assist in the Premier League. One assist in the Premier League. Stat hai ye, and that one assist won, the City the Premier League. Does not mean he's the best assist king in the world. Stats is not everything in life, in football. Sometimes एक वो dirty worker चाहिए होता है हर टीम में। 11 में से कोई एक भी नहीं, dirty ही worker हो। ऑल्सो ही इज नॉट बीन इन द बेस्ट फॉर्म, ये तो मैं एडमिट करता हूँ। But I remember ही कैन डू live, बेटर। Bayt, remember me and you were on a live where I literally said 1 minute back, I had said Mount is not in form and he scored a stunner. ओ I द 3 remember. ऑल जर्मनी और इंग्लैंड का Yeah, नेशंस लीग, yeah, अरे भाई he व्हाट अ scored a मैच, stunner. हैवर्ट्स He आल्सो scored a, स्कोर्ड। अच्छा yeah. आज भी वैसे ही हो जाए, पुलिसिक भी आप कमेंट देख रहा हूँ अंश का, मैं पुलिसिक और माउंट माइट स्कोर इन द सेम गेम, हु नोज राइट, दैट माइट बी समथिंग, आई डोंट नो। बट इस बार चांस, भाई मैंने तो प्रेडिक्ट तो किया था सेमीफाइनल्स तक जाएंगे, लेकिन दोनों परफॉर्मेंस जो से देखे ना, लॉजिक तो नहीं बताता, ये गट फील है जोएब, गट फील ही है। लॉजिक तो बताएगा इफ दे कम सेकंड इन द ग्रुप दे आर एनीवे आउट। आई डोंट थिंक दे आर बीटिंग इंग्लैंड ऑनेस्टली। नेदरलैंड्स आर नॉट बीटिंग इंग्लैंड। आई डोंट सी देम बीटिंग इंग्लैंड। बट ये मैंने कर्स नहीं आई नो। चाहिए, ये कर्स नहीं चाहिए प्लीज अंकित भाई, प्लीज ये कर्स मत करना प्लीज। लेकिन अगर फर्स्ट आते तब भी डिफिकल्ट है भाई, अर्जेंटीना आएगी अगर अर्जेंटीना टॉप द ग्रुप। अभी भी बहुत चीज बाकी है यार, अभी बहुत कॉम्बिनेशंस बाकी है, लेट्स सी। एक्वाडोर माइट हैव अ से भाई, सेनेगल एक्वाडोर वाला भी 6 पॉइंटर है, जस्ट लाइक आई वुड से स्विट्जरलैंड सर्बिया 6 पॉइंटर होगा इन ग्रुप जी। देन ग्रुप एच में यू कैन आर्ग्यू इट विल बी नो यूरुग्वाई और क्या बोलते गाना का 6 पॉइंटर हो सकता है। बहुत अच्छे मैचेस अभी बाकी यार, डिस्पाइट क्रोएशिया का, कनाडा का, मतलब क्या बोला है कनाडा का कोच, भाई कनाडा एकदम बिंदास खेली बाय द वे, यस थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर Oh, इसलिए about the बिकॉज़ आई F. लिव देयर। I think he dropped the F bomb and he या said, या "Where was आई विल स्क्रू द एफ ऑफ क्रोएशिया ब्रो, it?" दैट्स ऑल, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम एंड आई कैन हियर हिम बिकॉज़ दे वर हाईली अनलकी, टॉक अबाउट अनलकी, बट अगेन इट्स अ टूर्नामेंट दैट हैपेंस। ये क्या है, क्या Oh कमेंट yeah, है this is भाई, पता नहीं। confirmed by the way. 1st December को Dahea, Ilanga and Donny van de Beek are coming to Goa. सच में? Yeah, they are coming to Goa. करा दो अंकित भाई मेरी फ्लाइट की टिकट प्लीज, अरे आई मैं बी देयर। मैं करा दूं, बोलो भाई, गरीब इंसान से। मैं यहाँ बोल रहा था भाई चिन्मय, आप कुछ प्लान बना रहे थे, बोलना भाई, ऊपर चिन्मय मुझसे पूछ रहे। आई नहीं थिंक एक्चुअली 1st इट्स इट्स December इट्स अ वर्थ इट यार, मतलब क्या कुछ क्या है some event, और some भाई, some foundation. Oh गोल क्यों होने वाला है, साका कम ऑन गोल। अरे मैन, हाउ डिड दे नॉट स्कोर? Kane साका विद अ कट massive. बैक, भाई बेलिंगम टू साका, साका बैक टू, आई थिंक ट्राई टू गिव टू बेलिंगम, लेकिन केन के पास गई बॉल, एंड आई थिंक अच्छा डिफेंसिव, आई थिंक ब्लॉक था। ओ जस्ट अबाउट, अच्छा तो नहीं बोलूंगा। Oh man, just about भाई जिमरमैन, बिटवीन द लेग्स ऑलमोस्ट नटमेग हो जाता। एनी अपडेट ऑन नेशनल चैनल सौरभ? नॉट श्योर यार, आप क्या पूछ रहे हो? हुज मोस्ट एथलेटिक, फोर्डन और माउंट? बट नाइस टू सी यू अगेन भाई, जो भी आए भूलना मत लाइक करना। फोर्डन और माउंट एथलेटिक में तो यार आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं, बट आई थिंक देयर इज ओनली वन आंसर राइट इस पे, जिनमें Different qualities. We क्या shot क्यों, I don't know why. माउंट मारे छक्का यार, माउंट की I don't बात हो know रहा why. है माउंट। मगवायर I बॉलिंग ब्रो, मगवायर इज बॉलिंग। look at him. Look at him. Beautiful यार. I'm telling you, in England colors, confidence. I think main thing is confidence. I know he's not a great player. I will not term बस him that. कॉन्फिडेंस प्लेयर को कहाँ से कहाँ लेके चले जाता है, यही है इंग्लैंड टीम का पूरा ब्लूप्रिंट। हाँ यार, यू चिन्मय डोंट आप कहाँ देख रहे हो मैच को? आई मेरा एम टाइम स्टैम्प वाचिंग ये है। आई एम वाचिंग ऑन स्पोर्ट्स 18 वन चैनल लाइव हाँ गुड, आई एम ऑल्सो द 10:47। सेम भाई। अच्छा सौरभ, पता नहीं है, पहले लोग बोल रहे थे बाबा को, अब यश को भी लगाया क्या कुछ? यार आज कॉपीराइट क्यों लगे यार? एक स्ट्रीम को लगा है ना, चैनल को थोड़ी लगा है। आई होप इट्स नॉट एज बैड एज व्हाट हैपेंड टू मी यार, आई थिंक सो नॉट। yours was बाबा से तो yours मैंने was बात कर लिया, आई थिंक इज फाइन। yours was sad. I it was sad to see हाँ, but I got whatever it back happened, as well after a honestly. lot of hard work, I know, Yeah. but whatever it is. But yeah, I must say, I must admit, चीज जो वो जो मेहनत थी वो तो चला गया ना, in terms of basically, whatever. But anyway,
How Chinmay became supporter of England, यार ये तो सुनना पड़ेगा स्टोरी यार, बोलिए How I चिन्मय became a प्लीज. supporter of England. So, EPL. guys, not only in football, it is also in cricket. I know you might hate me, but cricket and football दोनों है. The point हाँ नहीं is, बहुत है, मैं देखो अपने चैट में आते हैं यार कुछ लोग इंग्लैंड फैंस इंडिया से. and early in my childhood, I shifted to England. First, I stayed in Leeds, then I stayed in Manchester, then I stayed in Sheffield. And बस मेरे में मतलब मैं citizen तो I was born in India, but वो बात ऐसी होगी that बड़े होते होते I have always seen the likes of Kevin Peterson, Wayne Rooney, Lampard, Gerrard, and वही है, then when you are exposed to that early ना, you kind I, of I'm and take that. I was I can give away my age. I'm born in 2001, and 2005 onwards I've been exposed to football, and 2007 I watched my first game at Old Trafford. So I just stopped everything else, and I decided कि भाई United and England, अरे these are my. स्टर्लिंग मैन, बॉलिंग स्टर्लिंग बॉलिंग. So that is how I became a supporter of England. I have not नाइस seen any नाइस. other team, so always चलो taught to me गुड, गुड टू नो becoming a. दैट यार सचिन भाई, मैं एक्चुअली पहली बार सुना यार ये स्टोरी. नाइस, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन यार जोइब. बट या देखो एवरी टाइम देयर इज, आप बोलिए यार, मतलब आप लोग बोलिए जो भी देख रहे हैं, आप लोग कौन सा टीम सपोर्ट कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं. मतलब अगेन इट माइट बी रीसेंट, इट माइट बी ओल्ड, इट डजंट मैटर. देयर हैज टू बी सम एक रिलेशन होता है ना एवरीवन. देखिए मुझे ये भी मालूम है बहुत लोग बोलते हैं आप लोग यार इंग्लिश फुटबॉल और उसको सपोर्ट करो जैसे देन मोर देन इंडियन फुटबॉल. ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर बेसिकली वेरी यंग ना, यू डोंट हैव दैट सेंस एनीवे. सेकेंडली आप देखते हो ना एक बार, एंड समटाइम्स certain things relate to you. मैं तो बोलता हूँ for me football has been a getaway always has Yeah, been a getaway bro. मतलब wherever you're down this thing ना, for me like काफी लोग comedy देखते हैं ना, football and rather sports generally ना gave me that thing that just in your zone. मतलब nothing like it because the adrenaline rush होता है ना, it's something else. And that moment you relate to some team, I don't know why you cannot reason oh, sometimes नहीं. he tried अरे a भाई he केन ने tried a 22 Richarlison. केन ट्राइंग टू डू अ रिचार्लिसन, लेकिन लेट हो गए भाई. बिल्कुल यार सौरभ, आई हियर यू बिल्कुल. इज दिस सम सॉर्ट ऑफ illusion that has been conjured by Southampton? Harry Maguire's dribbling and creating chances simply unbelievable. Harry Maguire is the real goat. Messi गाली देगा I अभी. see your name suggests something else, sir. But okay. नहीं नहीं, मेसी इज गोट, नोज हिज स्टफ यार बिल्कुल. लेकिन देखिए साथ साथ में इट्स नॉट रॉन्ग दैट इट्स बेसिकली साउथगेट इफेक्ट यार. यू हैव टू से that Harry Confidence, Maguire is doing well. confidence. The minute he was asked about Maguire, the minute he was asked about Stones, he just said one thing: they've been my trusted centre backs, and I'm not going to change. And it's paying off. देखो यार यहाँ पर मटाटा यूनाइटेड बोल रहे भाई ईटीएच जो नहीं खिलाया ना, उससे हैरी मगवायर के अंदर की बेसिकली जो जज्बा है ना वो जागा है. डिएगो Eric मगवायर. Eric Ten Eric Ten Hag की बात हम जनवरी में ही करें तो बेटर है, I think. Let's भाई keep Ten Hag on the back look burner. look at that bro, as in that from England, new USA is also not too bad. We should not be really hyping up England just for the timing because 0-0 है भाई. डेस्ट मैंने क्रिटिसाइज किया डिफेंसिवली ही इज वेरी वीक, बट ऑफेंसिवली ही इज एक्चुअली क्वाइट गुड. Maybe उन लोग का ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है. Never know. Yeah, he's not a passer really, but he's he joins in that. He's like more like a Cancelo, I would say, right? Hmm. Not of that quality, but poor man's But Cancelo. Cancelo defensively good. हाँ, this guy is not good यार अभी के लिए एटलीस्ट. भाई मैंने एक सेकंड ये कमेंट मिस कर दिया था. मटाट यूनाइटेड, ऑनेस्टली आई हैव माय व्यूज अबाउट इंडिया. एटलीस्ट मुझे याद है जितना मैंने शेयर किया था ना. देखिए क्या होता था लेट 90s में, दे यूज्ड टू शो ओनली द मेजर मैचेस. हो गया चैंपियंस लीग सेमीज, फाइनल्स, यूरोज, नॉकआउट स्टेजेस, बीट वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेजेस. जहां तक मुझे याद है वो हाइप हुआ करते थे, खाली वो देखते थे. एक तो केबल टीवी के सब घर में होते हुआ भी नहीं करते थे. सेकेंडली जब 2002 में आया ना वर्ल्ड कप एशिया में, आई फील दैट वाज द मोमेंट दैट दे रियलाइज ओ मैन इन एशिया आल्सो फुटबॉल कैन बी बिगर देन व्हाट इट इज. शॉट ऑन गोल काउंट होगा बट कम ऑन, आई वोंट काउंट इट एज शॉट. तो उस समय आई थिंक व्हाट प्रीमियर लीग डिड वेल इज दे एक्चुअली आइडेंटिफाइड द राइट, आई वुड से द स्पॉन्सर्स मे बी द राइट टाइमिंग. उन्होंने करना शुरू किया लिटरली एवरी थिंग ऑफ द प्रीमियर लीग दे टू स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, 98 में भी शुरू हो गया था, आई रिमेंबर दैट. लेकिन 2002 आई थिंक वाज द मेन डिफरेंस. और यहाँ पर एक हेडर आया है फ्रॉम अक्रॉस, बट आई थिंक I was close. राइट लेट हो गया. I was scared. हाँ तो आई थिंक 2002 वर्ल्ड कप
in a strange way, I think was reason of football and Premier League. Usse pehle Serie A used to be more, and that's why I'm a supporter of AC Milan as well, people. लेकिन हाँ, certainly मुझे लगता है that was the जो मुझे याद है. I don't know if Chinmay might add. Premier League, I think at least Asia, India में तो एशिया के लिए यही बोलूंगा that it became one of the most things, you know. Premier League, yeah. Of course, और हिस्ट्री भी बोलेंगे ना. देखिए, चैंपियंस लीग 99 was the first match I watched. ठीक है, I think it was Chelsea Barcelona, but we all remember 99 का. With all due respect बोलना पड़ेगा, as much as I would not like to say it, लेकिन Manchester United won the league, but it was only the only Champions League for a good while that Alex Ferguson had also won. Thank you. The Alex Ferguson, Thank who you. is one of the goats. 2008. We defeated someone in for a very 2008. long time. It put it that I way. don't remember who the finalists were. 2008 में we defeated भाई वही someone मैं बोल रहा in हूँ. the final. लेकिन I in think those 10 years, just like we should have won more Champions League in 2000s, right? Even you guys should have won more Champions League. That's what I'm trying to say. Pep Guardiola. But हाँ, Pep Guardiola and Messi. fair Only enough. only अगर two reasons why we probably didn't win in 2009 or 11. Messi बट destroyed वही है us. ना, देखो लेकिन उस समय आई थिंक जो चैंपियंस लीग फुटबॉल का जो क्रेज शुरू हुआ था ना, आई थिंक वो शुरू हो गया था ऑलरेडी 99 में, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वन, और वो भी एक रीजन हो सकता है. एक्चुअली व्हेन आई सेड एशिया गेटिंग अ वर्ल्ड कप, maybe Manchester United winning the 99 Champions League was also a big deal about England, football being Yeah. popular. So why not even they should get the credit to some extent. Of course, the way they won also was very dramatic. Who can forget that, right? Ole Gunnar अगर Solskjaer. यार मतलब फुटबॉलिंग वाइज में हिम एंड शेरिंगहम, आई फेल्ट दे वर अंडररेटेड. आई जेन्युइनली बिलीव दैट. अरे यार, आपने भी सेम बोला है मटाटा यूनाइटेड भाई. इंटरेस्टिंग. केन इंजर हुआ, रिप्लेसमेंट वैभव, हमने बात किया उसके बारे में. कैलम विल्सन इज व्हाट द बेस्ट पिक राइट नाउ इज. बट अगेन इफ रैशफोर्ड इज पिक्ड, because Rashford has more movement in him, then I think it will not be too bad for England, who at times go into their very rigid structure. That एक चीज मैं बोलूंगा. तो वहां पर I don't think it'll be too bad if Rashford starts as well. अगर लेकिन again, why are you hoping for Kane to be injured, bro? Yeah, ESPN was, I think it was, again, they're not sponsors, but I have to give them the credit because we all remember the old ESPN, only ESPN. Of course, John Dykes को मैं याद रखूंगा यार. For me, John Dykes इसलिए legend है. When I met him twice, bro, trust me, that was like, होता ना, literally goosebumps. Like I'm talking about it, I'm getting goosebumps right now because football focus है. John Dykes जो show आता था ना, I don't know if people remember. That was the show which made me understand the tactical नाउस ऑफ फुटबॉल वेरी इंटरेस्टिंगली. यहाँ पर केन ने अच्छा किया है ना, होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा किया यार. Kane. साका hold कमिंग up इन, play. बेलिंगहम जॉइनिंग इन. Come on. भाई बेलिंगहम बैड वन ब्रो. The one good thing I like about this match is USA is not sitting back. So it in a way, with the quality England have, they should be able to break them down. It is not as if they have 11 players behind the ball, USA. So I think England, if quality does stream through, not taking anything away from USA, but because they're not really sitting back per se, England might be able to break through. देखते हैं अभी. लेट्स सी. अच्छा, नेत्रा सिंह सेइंग प्रीमियर लीग इज ओवररेटेड. देखिए, एक और रीजन मैं बताना चाहूंगा. एज मच एज इंग्लिश ओवररेटेड है 100%, आई अग्री टू सम एक्सटेंट, लेकिन आई डोंट अग्री द फैक्ट दैट एशिया में हम बात कर रहे थे ना, नेत्रा सिंह, आई नो लॉट ऑफ फैंस आर देयर. मैं खुद देखो भाई, मैं देखो बार्सिलोना, ला लीगा, सेरिया, मैंने इतना देखा है. From I'm telling you, from 1999 to 2002, I was to watch that more than Premier League, जितना हो सके. For me, I would say the reason is because La Liga ने marketing अच्छा नहीं किया है. England have taken that opportunity, be it Manchester United winning the 99 Champions League, be it 2002 World Cup being in Asia, be it Chelsea investing a lot of money. Those were moments which were like, I used to remember इतने सारे crazy shows आते थे about Premier League. ला लीगा के लिए वो शोज बहुत कम होते भी तो नॉट द बेस्ट ऑफ द होस्ट यूज्ड टू बी देयर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट इज द रीजन व्हाई एक ओवर हाइप हो गया है. बट एज अ व्यूअर, मैं चॉइस होता है, एवरीवन हैज अ चॉइस. चिन्मय एंड मी प्रीटी श्योर अगर पूछा जाए तो आई वुड से दैट आज के दिन में मैं तो प्रीमियर लीग भी नहीं बोलूंगा, मैं तो एक्चुअली आयरॉनिकली बोलूंगा जस्ट टू वॉच ना फुटबॉल. क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ, कंपटीशन बोल रहा हूँ. आई लाइक सेरिया बिकॉज सेरिया में अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है आज के दिन. Serie A somehow. I mean, I'm sorry, I'm going to be very honest. I don't keep a track every week, every weekend. I'm not going to be sitting down watching not all everyone matches. does. It's But okay. whenever I see the tables, yeah, they're actually always so competitive.
always 8 point gap, 2 point gap, 3 point gap. I think competition is something people like to It's see. more like वहां पे मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं, put it that way, आज के Yeah, दिन में तो true. ड्रामा. सो एज अ व्यूअर, लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज मैं खुद बोलता हूँ भाई आप बिग बॉस और क्या बोलते हैं एमटीवी जाने देखो देखो, टू सम एक्सटेंट यू आल्सो लाइक ड्रामा इन फुटबॉल मैचेस, दैट्स व्हाई वो एड्रेनलिन True. रश हमें चाहिए. इंग्लैंड और आप देखो इंग्लैंड में आपने देखा है लीड्स यूनाइटेड स्क्रूड चेल्सी ब्रो. You remember that performance? Yes, I'm remembering a bad performance of Chelsea. That I is what mean, happens in England. That is what Leeds happens is in the Serie A. entertainment team. Leeds is the entertainment team of the Premier League. You watch Hmm. Leeds, you are guaranteed either they will leak goals or they will score goals. बात Yeah, वैसी है with quality, Leeds. लेकिन मैं आई एग्री करता हूँ, क्वालिटी ओवर द इयर्स आप देखो, एंड दैट्स अ प्रूफ व्हाई हैव द स्पैनिश टीम्स वन सो मेनी चैंपियंस लीग, बिकॉज द क्वालिटी वाज देयर. Quality is cream are better in Spain, but I think entire league, and as a viewer, if I'm a neutral, मेरा choice ये होता है कि I would rather want to see drama, competition, at the same time good I football. mean, the basic factor of the Premier League, the basic selling point of the Premier League, with the way I see it, and I'm a United fan, so I'll agree with it, अरे लड़ाई is होगी that यार. anyone can beat anyone in the Premier League. In हाँ, the that's the La Liga basic or point. Yeah. in maybe say the Bundesliga. Bundesliga, September में Bayern were not at top of the league. I had a few Bayern fans crying and saying, "Oh, when ये कब हो गया यार? First time in 15 years we are not top of the league and this and that." And I mean, it tells you with the Premier League, Mhm. who predicted Arsenal? I mean not even Mikel Arteta might have thought कि हम इतना अच्छा start करेंगे. And it tells you Premier League competition, drama, more everything is a lot more decisions, referee, spotlight, VAR, everything is under the under the pump with the Premier League. बिल्कुल बिल्कुल. Is USA playing with caution? If yes, so then wrong decision as the header exposed England defense. आई डोंट नो यार, मतलब वही सेम चीज है जो हम बात कर रहे थे अबाउट से मे बी गाना वेकिंग अप टू लेट अगेंस्ट पोर्चुगल. दे शुड हैव डन इट फ्रॉम मिनट वन. जापान, एक्चुअली इट वर्क फॉर जापान, डिड नॉट वर्क फॉर गाना, बट जापान यही कर रही थी जर्मनी के साथ में, याद रखिए. इट वर्क फॉर देम, सो मे बी Germany. दे आर गोइंग द जापान वे. आई डोंट नो. अरे साका शुड हैव केप्ट दैट बॉल. या 100%. अगेन एक चीज याद रखें, मेसी इज गोट एंड एवरीवन वाचिंग. मैं जब कोई भी टीम एकदम खतरनाक फुटबॉल खेलती है ना, सबसे पहले रेफरेंस किसका देता हूँ, किसको याद है? मैं तो प्राइम बारसा. दैट इज व्हाट कम्स टू माय माउथ व्हेन आई से प्राइम बारसा. मेसी इज गोट, यू सेड इट राइट. एंड आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी आर टू टीम्स व्हिच हैव फेस्ड. आई नो चेल्सी का थोड़ा आर्ग्यूएबल था, थोड़ा क्या, प्रीटी श्योर 2009 में रॉबरी थी, यू नो दैट. हाँ वो तो लेकिन I'll agree with you. I'll agree with you completely. 2011 की टीम में एज मच एज यूनाइटेड वर अ ग्रेट टीम, एब्सोल्युटली, बारसा वर नेक्स्ट लेवल. I would want to see थोड़ा controversy कर देते हैं, अभी करना है तो 2011 versus 2011 versus 2017 Madrid. How would that be? I in a Champions League match, it's difficult to call. You actually put a difficult question. लेकिन just in terms of as a viewer ना, एक्चुअली ना मैं, आई नो मेसी को नाराज हो जाएंगे. मैं तो एक्चुअली आपको पता है यार, चेल्सी को मैं फॉलो क्यों करता हूँ, आई लाइक दैट काइंड ऑफ फुटबॉल मोर यार. इट्स जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाइल आई रियली प्रेज एंड अप्रिशिएट कि हम वैसे फुटबॉल नहीं खेल सकते जैसे बारसा खेलती थी हमेशा. आई वुड अग्री देयर. लेकिन मैं एक्चुअली मैं रियल मैड्रिड इन दैट पर्टिकुलर, एज अ व्यूअर आई वुड पिक दैट. एज अ कोच आई वुड वांट, अरे मिस कर दिया. एज अ कोच आई वुड वांट बारसा, लेकिन Thank मैकेनी ने you. मिस कर दिया. दैट शुड हैव बीन अ Thank you, गोल guys. ब्रो. Thank you. दैट शुड हैव बीन अ गोल. भैया टिंग टिंग आवाज क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है क्या? एक सेकंड, पता नहीं. एनीवे भाई सब लोग, मैकेनी, आप जानते हो भाई, मैकेनी इज अ पर्सन हु कैन गेट इन द बॉक्स. आई थिंक इंग्लैंड गॉट अवे. आई थिंक कमिंग बैक टू द क्वेश्चन यहाँ पे, मटाटा यूनाइटेड, नाउ आई एग्री विद यू. मटाटा यूनाइटेड, आई थिंक दे शुड डू मोर ऑफ दिस. यूएसए दैट इज. I या think अनिश, this is लेकिन what will hurt. This is what will हाँ. hurt England if they're not able to get control of it quick enough. But Then it are you will not hurt. disappointed that USA are known for that high press and things like that? वो नहीं हो रहा ना, मतलब एक, हाँ, that's why मटाटा well, यूनाइटेड पूछ रहे थे. हो सकता है there might be a different game plan. What if the game plan is to wear them off? Never know. But England have a better squad, man. I don't think it'll work. मतलब वही है, जर्मनी का क्यों वर्क हुआ? क्योंकि जापान का अगेंस्ट जर्मनी, जर्मनी don't have a bench today. They're not the Yeah. Germany of the old.
whereas you Germany is. I don't rate Germany at all. I'm not even joking. we I'm not वही saying यार because of हम कर hate. रहे थे ना, we The three all only we watched reason that. is That was bench very bad in कहाँ है? quality, that The match. best thing about Germany was they had a squad. Team नहीं, they had a squad. अब वो टीम ही 11 में से I would say there are informed 6-7 players and squad तो छोड़ दो. I think किसी का birthday if I'm not wrong. किसी का birthday in the अरे viewers. ईशान बर्थडे यार, भाई ईशान को हैप्पी बर्थडे यार, एब्सोल्युटली Happy birthday sir. हैप्पी बर्थडे भाई आपके लिए। आई डोंट नो मैन, बिकॉज भाई आपका बर्थडे है, कुछ तो बना, वी विल, भाई हम तो खुश हैं आपके बर्थडे में, तो हम तो यही This कर is रहे हैं। really good. This is really good. My heart soars with the eagle's nest. Yeah, this is the most relevant I could find. But by anyway, we are just happy for you, Ishan. Have a good birthday. Take care, and of course enjoy करिए matches. हम हमारे साथ join करिए। नेत्रा पूछ रहे हैं चिन्मय को, being a neutral, what's your take on Argentina Mexico? As होने a वाला है neutral, big match. no hate. I want Argentina to get through. It's the goats last World Cup. I hope we can bounce back. They need to bounce back. So Mm-hmm. I hope tomorrow is a game where Argentina step up and show that they can do it. They can get through to the round of 16. कल Ishan going अर्जेंटीना here, अगर happy हार birthday गई again. कल अगर अर्जेंटीना हार गई it would be very difficult and well I don't think Mm-hmm. Messi is getting another shot. So भाई अजय बोल रहे हैं मैकेनी इज द पॉगबा 2.0। आई डोंट नो, मतलब आई थिंक अब मैं पॉगबा के कमेंट्स नहीं लेता. I've stopped talking about Paul Pogba. But भाई चिन्मय तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है आज, लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूं, पॉगबा एंड मैकेनी आर टू डिफरेंट प्लेयर्स यार। ooh, एक that सेकंड, was हाउ one of इज those. चिन्मय अहेड ऑफ मी? चिन्मय, आर यू वाचिंग ऑन हाई डेफिनेशन और स्टैंडर्ड डेफिनेशन? No, standard, all standard. भाई कैसे मेरे से आगे कैसे हो आप? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं भी स्टैंडर्ड 28, डेफिनेशन 20. स्पोर्ट्स I 18 में don't हूँ। know. This ये TV कैसे हो is गया? doing magic. I don't know. आज केक खाना चावल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। What's up? All good. By the way, welcome to the channel. Do not forget to hit that like button, and of course, subscribe to even our second channel. I know a lot of times you would expect regular content on either of our channels because of this crazy World Cup जो हुआ था on this channel during the cricket World Cup, वहां पर ज्यादा कर रहा था, तो वहां पर हम करते हैं क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। वहां पर फुटबॉल ज्यादा हम करेंगे, लाइक फैंटेसी फुटबॉल एंड you know Premier League watch-alongs and Serie A or maybe La Liga watch-alongs. लेकिन apart from that cricket भी करते हैं Almighty Sports Plus पे. So people who are new to the channel, do consider subscribing to them as well. We are coming back on that regularly as well as soon as the World Cup is over or even nearing to the knockout stage जहाँ पर कम हो जाएंगे matches. Of course यहाँ पर मैकेनी वो could never, भाई वही है, बहुत different players यार। मैं तो बोलूंगा मैकेनी has better work rate any day of the week वैभव, लेकिन वही different players है। अच्छा, Valverde Barca have defeated the 2017 Real Madrid. So just imagine what would happen if they would have faced. या नहीं, वही है, Messi is good. Champions League एक different quality थी, but ये बोलूंगा मैं. I agree with you. I'm not. Champions, हाँ, क्वेश्चन आई थिंक चैंपियंस लीग था ना, जहां तक मुझे याद है। हाँ. मैं वो सोचकर आंसर किया, बट बाय द वे मेसी इज गुड। अगेन याद रखिए, मैंने क्या बोला, एज अ व्यूअर आई वुड टेक दैट, एज अ कोच आई वुड रादर हैव दैट बारसा यार एनी डे ऑफ द वीक। ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेफ, वो रियलिटी है, क्योंकि मैं जो देखना चाहता हूँ वर्सेस क्या प्लेयर्स चाहता हूँ एज अ कोच, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? बिकॉज व्हेन यू वांट टू वॉच, यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दैट्स व्हाट दैट मैड्रिड साइड हैड। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन भैया? कुशाल इन द हाउस यार, कुशाल को बिग अप है यार। कुशाल ऑफ कोर्स भाई, आप जानते हो मैंने पोस्ट किया आज, डू चेक आउट हिज पोस्ट, उनको भी शॉट आउट दिया है। लेकिन भाई आज मैंने तो 3-1 बोला था कुशाल, चिन्मय ने 4-1 बोला था, लेकिन द वे थिंग्स आर गोइंग जैसे आप पूछ रहे हो, आई थिंक इट विल बी 2-0। एक गोल मारेगी इंग्लैंड और फिर यूएसए फाइनली ओपन अप हो जाएगी, विच विल गिव देम अ चांस टू काइंड ऑफ ओपन देम अप अगेन। तो मैं बोला 2-0 अभी। पुलिसिक, आई एम सॉरी ब्रो, ही इज England win. इनविजिबल। बस. England win. मैं खुश. 94th मिनट में विनर मार दो 1-0. I wouldn't care. बस जीत जाए. भाई यूएसए ना, honestly they are in a transition themselves, so I don't see them that 2010 वाली यूएसए नहीं है ये। भाई वो कौन था, मैं नाम क्यों भूल रहा आजकल, वो फिल्म का प्लेयर यार, यूएसए का वन ऑफ द लेजेंड्स। ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु वर लाइक द पिन अप बॉयज। कैसे बोल रहा है फिल्म का They प्लेयर? had from Australia, Clint Dempsey.
Clint Dempsey. Clint If you're Dempsey, not of wrong. course. Oh my god, of course, Clint Dempsey. He was, They I had think, Tim underrated. Cahill and Australia का एवर्टन had Tim Cahill. ये दो प्लेयर काफी कल्ट हीरो बन गए थे. मतलब हाँ they यार, बिल्कुल. had become very big cult heroes for not only for the countries but मतलब rocking the Premier League. Not stats wise, of course, but an OG fan would always remember Dempsey and Cahill. बिल्कुल, बिल्कुल. इनफैक्ट मैं तो वो बोलूँगा इन दैट एवर्टन साइड केहिल एंड आर्टेटा प्लेड टुगेदर इफ यू रिमेंबर एंड दैट वाज समथिंग Cahill, दैट वी कैन Arteta नेवर फॉरगेट. and actually एक हद तक एक मारुआन फेलेनी भी था. मारुआन नहीं, फेलेनी. फेलेनी बाद में था. उससे पहले एक बंदा था भाई जो रियल मैड्रिड गया था. ग्रेविसन. थॉमस ग्रेविसन. थॉमस I've heard ग्रेविसन the वाज द name. गाय. I can recollect, Yeah, but I yeah. don't. He didn't have hair. He was like a hard tackling midfielder. So he used to be the CDM and used to have Arteta and Cahill. Ooh, in the post. Oh ho! How is Chinmay ahead of you यार? मैं तो यार Pulisic. ये तो सॉल्व करना पड़ेगा. चिन्मय मेरे से 2 सेकंड आगे है भाई. पुलिसिक. Pulisic. मैंने अभी गाली दिया. पुलिसिक इज इनविजिबल. Finally, he Ooh, has been visible. Pickford was shook. Remove Sterling and put Grealish. Why, bro? I think it's about USA keeping a low block, which is 32 not minutes easy हुए to. यार. Why do you want to make a substitution now? 32 minutes हुए. नहीं, I think it's arguably आप बोल सकते हो it is almost a 50-50 है. It's not like a game जहाँ पर USA ने dominate किया है, इंग्लैंड ने dominate किया है, but either of the sides have not gone to gear 3 also. तो सब्स्टिट्यूट अभी यार बनता नहीं है. आई डोंट थिंक इतने थके भी होंगे. दे माइट जस्ट गो विद मोर अटैकिंग मेंटालिटी इन द सेकंड हाफ अगर जाता है तब तक. अरे थैंक्स यार कुशल. ऑलवेज यार पिकफोर्ड ड्रॉपफोर्ड बन गया था आफ्टर दैट शॉट. He was shook. या बट टॉकिंग अबाउट दैट पुलिसिक शॉट यार, चेल्सी के लिए वो शॉट बहुत कम लेता है मत से. Is he because he's the main man in USA? मतलब उसको पता है that he has to basically take things as a crush of the He neck. kind of humans on. हाँ मतलब Humans वही on लग of रहा है मुझे. और ऐसा भी है यूएसए को अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेंगे कंपेयर टू व्हाट चेल्सी साइड जनरली गेट. सो मे बी ही इज लाइक he's been told like just go for it. Exactly गौरव. भाई चेल्सी फैंस नो द पेन. वही सेम क्वेश्चन गौरव पूछ रहे. ओहो वेल डिफेंडेड बाय यूएसए बट देन एक मिस्टेक हुई बट जस्ट अबाउट क्लियर कर दिया फाइनली. Oh my god, this game is going to be long, people. Tell me about it. Because I feel क्या हो रहा है ना, दोनों teams wait कर रही है for that mistake, which will actually come in my personal opinion. The goal will come from a mistake. मैं बोल रहा हूँ चिन्मय. So Yeah, Pulisic is that I agree. He's hardly played on the left hand side as in a front three. Gaurav, yeah, you have a point. बहुत अच्छा point आपका. लेकिन किया यार ऐसा नहीं किया. मतलब लॉकडाउन Pulisic आया ही नहीं वापस ना. वो छुट्टी पर ही है अभी तक. हमारे पास था Let's be लॉकडाउन honest. मार्शियल. We had post हाँ. lockdown मार्शियल. He was different gravy. हैट्रिक मार दी थी भाई ने. First hat-trick for United after Van Persie. बस कहा गया उसे ढूंढो. वैसी वाली बात हो गई. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुलिसिक का ये भी है ना दैट ही वांट्स टू बी द मेन मैन. ही इज दैट काइंड ऑफ गाय. यू कैन सी हिम सेलिब्रेटिंग लाइक इन बिग गेम्स. आप देखते हो लाइक अगेंस्ट द लिवरपूल इन द लीग आपको याद हो तो देयर आर सम मोमेंट्स वेयर ही वुड लाइक टू बी मोर डायरेक्ट. वो होता है. तो चलो मगवायर ट्राइंग टू ऑर्केस्ट्रेट कि भाई थोड़ा वाइड जाओ ताकि बॉल खेले हम. आया अच्छा क्रॉस था यार. मेसन माउंट था क्या? प्रोबेबली माउंट श्योर माउंट छक्का मारने जा रहे थे लेकिन कोई नहीं कैच कर लिया भाई. भाई आई थिंक टर्नर है उनके गोलकीपर बाय द वे. आर्सेनल के नंबर 2 यूएसए के गोलकीपर. स्टोन्स क्लियरिंग इट. टर्नर ट्राइड अ नाइस डिस्ट्रीब्यूशन अटेम्प्ट यार बाय टर्नर. व्हाट डू यू से पीपल? दैट वाज समथिंग गुड. भाई रेफरी रोक क्यों रहे? क्या कुछ वीआर हो रहा है क्या? नहीं चलो कुछ नहीं हुआ. What where are you on this offside thing bro? जो semi automated offside शुरू हुआ है with हाँ. this मतलब
क्लियरली अटैकर को बेनिफिट नहीं मिलने वाला इन द नियर फ्यूचर. You look at Martinez. I'm sorry, मतलब I don't know if a lot of fans will get this or not, but एक speed करके बंदा है. You might be knowing Ronaldo का super fan है. He had हाँ, this of course, I show performance. speed. हाँ, I show speed. He had this performance in the charity match for Sidemen. मुझे बिल्कुल देखा था लाउटारो हमने. मार्टिनेज को देख के वो ही लग रहा था. कहाँ घूम रहा था मार्टिनेज वो मैच में? I don't know. Behind the defense lines आराम से रुके हुए and he's asking for a pass. नहीं तो वो तो मैच में डिस्ट्रीब्यूशन मिसिंग थी बिकॉज ऑफ सऊदी डूइंग वेल ना. भाई अटैक करो यार, कोई मिस्टेक हो गया गोल करो यार, अटैक करो कोई. I need to say I don't care if it's like a 4-3 match or something right now. मैंने ब्राजील और सर्बिया का जिंक्स कर दिया था. I told you that it's going to be the most interesting match in this World Cup almost. But जापान जर्मनी का भी बोला था, तो somewhere I was right. Maguire playing off the left foot, people. Maguire has played striker यार in the last one. Did you see कल Danilo Pereira क्या था भाई वो performance? What was that? I don't know how he lasted the match. The Portugal game, no? Huh? Just like our Dumfries, how did he last the Netherlands match? I have no idea. Dumfries, Timber. I really don't know. ओ भाई मैं मैकेनी साफ सफाई करते हुए the I don't know how Portugal defended that game. jersey. I don't know why Portugal defended that game, that way. They have Uruguay to come, they have South Korea to come. God save Portugal. Lucky they got the win yesterday. सच में बोल रहा हूँ मैं. But वही ना लकी आप बोल रहे हैं लेकिन it's a very important 3 points. वही चीज आज नेदरलैंड्स नहीं ले. Now you don't, I mean World Cup की बात वही होती है ना. You have to get whenever you can, you have to get the point. One mistake. France 3-1 up the last time. I remember 3-1 up the Pogba ने goal मारा, he started dancing, and they drew 3-all, lost on penalties. One mistake. Lapse of concentration हो गया, tournament खत्म हो गया. नहीं I hear you what you're saying, but I'm like some decisions या coaches ना कहीं ego भी आता है. I always feel that ego also has been an issue over the years about the changes, the substitution, lack of it, और tactics बोल लो, एक extra trust करते हैं few players. You feel it's biased, but somewhere on the line एक gut भी होता है ना, that they feel gut नहीं मतलब they are seeing players Tactics. और ज़्यादा close quarters के साथ. Tactics है, gut feeling है, और teamwork है, how they gel in the team है. ऐसा ही तो देखो ना, Pepe is not a starter. He's been taken to the World Cup, right? And he's okay. Maybe he might start the next game. Who knows now? But I don't see any complaints coming from his side. कभी-कभी वो छोटा सा Pepe for Portugal. कभी-कभी वो छोटा सा experience भी count हो जाता है. Dressing room also is important. Some players have a defined role in the team. लेकिन लुइस एनरिके इज नॉट दैट ना. वो तो बोले मैं रामोस क्यों लाऊंगा यार मैं वापस जब आई एम गेटिंग रिजल्ट्स. लुइस एनरिके की बात अब मुझे लगने लग गई है. यस आई वाज क्रिटिकल. और नाइस 1-2 यार यूएसए का. भाई 4 on 5 है. अरे मैन बैड क्रॉस भाई. डेक्लन राइस did well, Kane did well, Mount भाई he also did well, he is past it. यहाँ पर if I'm not wrong Saka what will he do? He is giving back. तो गलत कर दिया यहाँ पर भाई. बहुत अच्छा मूवमेंट था यहाँ पर. I hope Chelsea don't sell Pulisic, but Newcastle is looking for him. I don't know man. Ansh Pulisic का थोड़ा difficult है because I know he's very young, or in his day he can still create some magic. He's that kind of a player, that एक moment of magic है उसके अंदर. Problem ये है that he doesn't do it like in 3 matches out of the 4 that you play him. Arguably आप बोल सकते हो. तो Loftus-Cheek and others I know different position है, but वो अलग है. Loftus-Cheek magic नहीं बोलूंगा. वहां पर मैं बोलूंगा that he has his ability, but he needs to realize his ability. Pulisic का I don't know what goal होने वाला लगता है. अरे नहीं यार corner है. Man, that should have been an attempt on target. पता नहीं यार Pulisic का what do you think यार as an opposition fan यार Chinmay? How do you rate even Pulisic? Pulisic, I wanted him at one point of time. I wanted him at United. I'm not going to lie. The thing with Pulisic is, which also is with Ziyech, I think at this point of time, they have come in as good players at their club,
who've not been able to establish themselves at Chelsea. I don't know why that is. Maybe it's something with Chelsea. Also, managers keep on changing. You can't expect him to play in one perfect system all the time. But I don't know. I mean, I hope for his betterment, his career. I hope they can. Even him. There's talks about Ziyech going to Syria. If I'm not wrong, I don't remember if I report if हाँ I read मतलब that. there were talks लेकिन हुआ नहीं surprisingly. So let's see. I think Pulisic, team like Newcastle, Lingard did it with West Ham. Bought his career kind of back. ज़्यादा back तो नहीं आया क्योंकि again he suffered 1 year with United. Never know. Maybe a loan move might help, or maybe he can stay in. But I think Sterling's arrival at Chelsea काफी pressure तो डाला है वैसे Pulisic पे. I feel. भाई देखते हैं लेकिन अब. उसको भी तो खिला नहीं रहा है ढंग से मतलब करेक्ट पोजीशन में तो दैट्स व्हाट आई वुड आर्ग्यू बट एनीवे अब चेंज ऑफ मैनेजर्स भी हुआ है तो फेयर इनफ भाई अगेन पीपल वर वाचिंग अगेन जस्ट थैंक्स फॉर बीइंग लेकिन हम अभी ड्रामा वेट कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट ड्रामा हो रहा था यहाँ पर बिकॉज पुलिसिक गॉट अ हेडर ये टॉकिंग अबाउट Pulisic हिम तो भाई ये Pulisic तो I think he's taking your and my comments very seriously. I feel जैसी दोनों बार हमने पुलिसिक के बारे में बात किया भाई ही टर्न अप लेकिन देखिए इवन इन थोड़ा दैट मोमेंट यस let's talk ही शुड negatively हैव डन about बेटर England. I think England is one of the worst teams that have come out. I feel they might score after this. I don't know. I feel England is one of the worst teams that have come out, and Kane is not in good goal scoring form. I feel. I think Kane really needs to step up. ऐसा मैं अब बोलूंगा. चलो देखते हैं पुलिस को चाहिए फुल इज्जत ये सच्चाई ये है कि भाई अगर उसको इज्जत नहीं मिली तो इज्जत देता नहीं है वो तो उसके बुक में बायोग्राफी एक तो बायोग्राफी ये लोग कब लिखते हैं यार मतलब हैट्स ऑफ टू देम एक तो सोशल मीडिया में रहते हैं फुटबॉल खेलते हैं बायोग्राफी भी लिख देते हैं अरे भाई क्या कितना ऐसा टाइम कैसे मिलता है ट्रेनिंग भी करो जिम भी जाओ हमको भी दो भाई आपके 2-3 घंटे पुलिस भाई एक अच्छा क्रॉस आया है लेकिन आई थिंक टर्नर कैचेस बट हाँ पुलिस का एक और पोजीशन भी है ना आप देखो यूएसए में नॉट जस्ट ही इज द कैप्टन ही इज द मेन गाय इन टर्म्स ऑफ पिन अप बॉय एंड ऑल दैट तो डेफिनेटली ही गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन लेकिन साथ साथ में फुटबॉलिंग वाइज में ही प्लेज इन हिज पोजीशन व्हिच इज प्रेफर्ड ऑल द टाइम मतलब अनलेस कुछ इंजरी है अरे व्हाट वाज दिस बाय रॉबिन्सन यार रॉबिन्सन सोच रहे हैं अभी हाफ टाइम हो गया है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाफ टाइम में gave it away. I think for a top teams game, I don't know whether it's just me, Chinmay, or I don't know. आप लोग बोलिए चैट में सब लोग भाई. For a top teams game, arguably I would say that this has been one of the most draws games अभी तक और जैसे मैं बोल रहा हूँ Bellingham is creating a chance. It's a cross and they clear. That is just of all the people. Beauty. Oh. अरे शॉ है क्या वो छक्का मारा भाई बड़ा सा छक्का मारा है शॉ क्या ऑफ कोर्स साका Good one. साका ने मारा कि स्टर्लिंग ने साका ने Saka. Shaw. Wow. भाई एक तो स्टर्लिंग नजर नहीं आ रहे मुझे पता नहीं आप लोग को आ रहे कि नहीं मुझे तो नजर नहीं आ रहे पहले फ्यू मिनट्स ही वाज गुड आई एम नॉट एबल टू सी स्टर्लिंग इन द गेम इज ही प्लेइंग सब लोग बताइए भाई सब लोग चैट में बताइए स्टर्लिंग इज प्लेइंग और नॉट थोड़ा सा सरप्राइज हूं मैं काफी इनफैक्ट Shaw, I don't know if a lot of people have noticed, but this is the fittest Shaw has been. This is the fittest Shaw has been. I think under Ten Hag, since Ten Hag has come in, he's been very fit. I won't say thinner, but fitter. There was always talk he Shaw, they call him burger or hamburger, cheeseburger, something they call him as a matter of disrespect. But the way he's actually taken on the challenge is beautiful. सेकेंड हाफ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा यार बिकॉज रिमेंबर यार आप हम ग्रुप दिखाए इन दिस Oh, Mount! What a shot, bro! Oh, Turner did well. That was well moved, yaar. Again, it started from Shaw, if I'm not wrong. Keeper's going mad. एक सेकेंड स्टर्लिंग का ही टच था स्टर्लिंग भाई सुन वो भी सुन रहा है क्या अपना स्टर्लिंग का बहुत अच्छा टच था भाई शॉट टू स्टर्लिंग विद अ नाइस टच एंड माउंट विद अ नाइस बट टर्नर के लिए नॉट दैट डिफिकल्ट है मुझसे तो हाँ कमिंग बैक टू दिस देखिए जोहेब इंटरेस्टिंग तो 100% रहने वाला है बिकॉज ईरान रिमेंबर दे गॉट अ विन आज तो ऑल ऑफ अ सडन दिस ग्रुप इज ओपनड अप फॉर द टीम हु इज टारगेटिंग द सेकंड स्पॉट आई नो आइडियली सब लोग इस फर्स्ट स्पॉट टारगेट कर रहे हैं बट रियलिस्टिक हो रहा हूं मैं यहाँ पर ज्यादा
Pulisic, for out of 4 matches, 2 times he's played out of position, 1 time he's given 10 to 20 minutes. हाँ, but does that give enough excuse? देखिए, मैं अंश आप अगर देखते हो तो मैं तो एक्चुअली Pulisic के as in प्रति बोलता हूँ, I speak for Pulisic a lot of times. लेकिन honestly, the what he did with Tuchel was not right in my personal opinion. यहाँ पर half time हो गया यार, people. लेकिन at the same time, I think the guy should be applying himself better than what he has. But I agree about out of position. This match is giving pure Premier League wise, both sides attacking. Ajay, I think it could be more. और भाई भाई थैंक्स यार मैं वही सुनने में आया मुझे फोर्सा बारसा को भी शाउट आउट यार, बिल्कुल। लेकिन स्ट्राइक किसके लिए आ रही है यार फोर्सा बारसा, आप प्लीज बताइए भाई। सब लोग भी जो देखे ना, बाबा से मेरी बात हुई है लेकिन डिटेल में हुई नहीं अभी तक। आई नो दैट ही ऑल्सो गॉट अ स्ट्राइक, बट आई थिंक इट्स फाइन, ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ है, तो ही जस्ट अश्योर्ड मी दैट। वाईजेआर से तो मेरी बात नहीं हुई है, बट डू लेट मी नो यार हुआ क्या था, इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। मतलब pretty sure we are not doing anything illegal यार, यहाँ पर definitely something, everything is doing perfectly fine. जोएब, you know what, कभी कभी सरप्राइज भी अच्छा होता है। 1 मिनट एक्स्ट्रा खा लिया। टॉक अबाउट लास्ट मैच, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, नेदरलैंड्स को आफ्टर व्हाट हैपेंड विद वेलेंसियाज इंजरी वी जस्ट गॉट बड़ी 6 मिनट्स। दैट वाज रॉबरी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। जब बोलते ना पूरे वर्ल्ड कप में 7 8 9 10 11 12 मिनट मिल रहे हैं, 101st मिनट में विनर मारा है। अच्छा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस हो रहे हैं, आपके बेसिक इंजरीज भी हो रही है। लेकिन हाँ, इंग्लैंड वाले मैच में अभी आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल स्टॉपेज। I actually don't. No injury, nothing, no player went down. अच्छा है, थोड़ा डाइव कमेंट्स को थोड़ा दूर भगाते हुए, अच्छा है। अरे थैंक्स यार फोर्सा बारसा। अरे भैया बिग अप बोल रहे हैं, आदित्य भी बिग अप। चलो भाई, सब लोग लाइक कर दीजिए एब्सोल्युटली। एंड यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं जो हुआ है अभी तक। आई डोंट नो यार, मतलब इज इट अ स्नूज फेस्ट और इज इट क्लोज टू दैट? Honestly, Chinmay, what is your opinion? Yeah, disappointed with England and USA both? I am disappointed with England. I will be honest. With USA, you cannot say that they're not trying. They've hit the tactical हो post. सकता है। And they've hit the post. Pulisic has hit the post. They're going through air. They've taken 1 or 2 headers here and there. So I can't really say they're not trying. I think with England, they could have been 1-0 up or 2-0 up. Could have. Saka ke liye golden chance tha. There was a chance of Bellingham, if I'm not wrong. They need to take the chances, because again, I've just said it थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, it's the World Cup. One mistake here, you go. You need to win games like these to ensure you top the group for a better draw. So, let's hope. Yeah, बिल्कुल आई हियर यू। बट बाय द वे यार, सब लोग जो आ रहे हैं ना, सब लोग आपके कमेंट भी दीजिए अबाउट दिस। अगेन आई वुड जस्ट क्विकली से माय पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर क्विकली। आई पर्सनली फील ना दैट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक इट्स अबाउट दैट यूएसए इनिशियली सिटिंग बैक, और हम सोच रहे थे मे बी डेस्ट इज अ टारगेट, और हाँ शॉ हैज रन डेस्ट कपल ऑफ टाइम्स हुआ है, लेकिन आई थिंक वही है, बिकॉज दे आर सिटिंग बैक, टाइलर एडम्स और मैकेनी आर एबल टू हेल्प जिमरमैन मोर। तो ये वहां पर आई थिंक दैट्स अ टैक्टिकल प्लॉय। अगेन एक शॉर्ट ब्लॉक किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिमरमैन ने एक किया था, ही वाज ऑलमोस्ट द लास्ट मैन। देन ऑफ कोर्स टर्नर मेड अ ब्रिलियंट सेव ऑफ माउंट। तो ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, बट अगेन आई एग्री विद चिन्मय, जो पुलिसिक ने जो किया है ना इस मैच में, आई थिंक हाँ यू कैन आर्ग्यू दैट हेडर ही वुड हैव डन लिटिल बिट बेटर, लेकिन आई थिंक जो शॉट मारा था बहुत ही बढ़िया मारा था। और उतना ही नहीं, आई थिंक जनरली स्पीकिंग भी आई थिंक they are looking that side जो despite lesser chances they are looking more lethal, which is actually scary for England, because remember भाई 3 ही पॉइंट आया अभी तक। Has a team gone out after winning the first game 3 say by crazy goal difference और 3 points आ गए? Yes, absolutely. So you cannot take foot off the pedal, absolutely. तो मुझे लगता है चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। क्या बोलते हो यार एवरीवन इन द चैट, चेंजेस? और चिन्मय आप लोग क्या बोल रहे हो भाई, जब भी अभी तो नहीं आएंगे? इमेजिन अगर 60 मिनट तक रहता है, might be an attacking change. I think could be तो रैशफोर्ड कि कैलम विल्सन? I would go for Rashford.
Okay. I think early on. Fair Early enough. on in the half fractured. Soccer is better than football till now. Like the stream, guys. Absolutely. USA looking better. Honestly, USA, आप expect कम करोगे. So I actually like the fact that they are able to come with a tactical plan. But again, as a viewer, I rather prefer by attacking football. सच में बोलूँ तो. और USA का pressing style, high energy press जो होता है, वो is something that you always associate. उनके leads के players है भाई. Aronson, talk about substitutions. Aronson आ सकते हैं. अगेन वो लेफ्ट हैंड साइड खेलते हैं तो इसलिए शायद शुरू नहीं करते बिकॉज पुलिसिक का बेस्ट पोजीशन वही है. यूएसए मिडफील्ड इज गुड एक्चुअली. फोर्सा बारसा बोल रहे थे फॉरवर्ड आर इशू आई थिंक शुड हैव स्कोर्ड. नहीं, आई हियर यू एब्सोल्युटली. लेकिन आई थिंक आर्ग्यूबली आप ये भी बोलोगे दैट इंग्लैंड आल्सो कुड हैव डन बेटर इन अ कपल ऑफ ओकेजन्स. लेकिन हाँ, आई एग्री बेटर चांसेस यूएसए. लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एक्सेट्रा इंग्लैंड ऐसा नहीं है कि टोटली. और भाई हाँ, एक मैकेनी वाला चांस है यार. मैकेनी वाला जो चांस था, आई थिंक दैट शुड हैव बीन अ गोल. दैट शुड हैव बीन अ गोल. That could have been a goal. That would have been very hurtful. That Pulisic chance that they're just showing now, that could have been a goal. And they've tried. I think you can't blame USA for not trying. I feel shots on target एक दिखा रहा है, but I feel it has been a more equal game than it looks. 1-1 for each shots on target possession, 62-38. I feel the USA is trying to trouble. Would not actually would not be surprising if they take a lead and then sit back. Never know. Okay. Okay. Let's see. 1 second. 1 second. I'm just taking a comment यहाँ पर. What are your views of Vinicius performances last night? यहाँ पर मैंने स्टार करके रखा. फराज, thanks for coming on यार. Again, do like the stream. अगर बहुत बढ़िया लगता है यार, आप लोग बने रहते हैं यहाँ पर 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक. और that's something that I always say, it's an almighty family. So it helps certainly when you guys come support us. एक encouragement मिलती है. तो फराज, आपने बोला है about Vinicius performance last night. आई वुड से इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट. मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट. हाँ, पहले फर्स्ट हाफ एन आवर में इट वाज लाइक ही वाज डूइंग मोर डिफेंसिव वर्क रादर देन अटैकिंग. बट विद एन Alexandro देयर, आई थिंक इट वाज नॉट टू बैड. एंड देन दे गॉट द जिस्ट ऑफ इट. दोनों ही असिस्ट विनीशियस जूनियर से आया यार. आई नो रिचार्लिसन वाला तो भाई क्या ही तो देंगे असिस्ट उसको. रिचार्लिसन वाज ऑल इट इज. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट Vinicius Junior, मैंने तो बोला है फराज, I don't know if you heard it on my Almighty Sports I channel. think in the first half Golden एक ball. chance था जो Vinicius Junior could have scored. I think the curl वाला एक chance था which he हाँ, I think but first goal भी उसके शॉट से ही आया था, rebound. True. But exactly, I think the fact that we're actually thinking Vinicius should have scored that tells you about his ability on the ball. And I feel he had a very good performance. Ulta, I'd actually say, I don't know, controversial opinion. Maybe Neymar was one of the worst attackers last night. I think his injury. Look, he's a great player. He's a superstar. Maybe his injury. Maybe with Jesus coming in, maybe Martinelli might come in. Maybe Anthony might come in. I don't know. Maybe it might just benefit Neymar to take a breather, to get in the right mindset, come back from injury for the knockouts. बिल्कुल बिल्कुल. Till now soccer is dominating. Jatin भी बोल रहा है यार, I wanted to see Madison play but sadly he's injured. भाई I think creativity के लिए plan B, Grealish, Madison, Foden, these are players who will come on as soon as they are needing that in the tournament. Grealish आए भी थे last match में, he scored. Rashford scored. I think जैसे बोला है चिन्मय ने, I believe that finally they'll be used. Madison लेकिन हाँ, he's missed training sessions, so I can understand. Foden from Mount, but Matata United, Foden should sub in. हाँ, maybe the fact is they are not attacking as much. USA by मतलब default they are more like counter attacking. So I can hear जो आप बोल रहे हो. I actually do not disagree with that absolutely. Rashford should play in place of Sterling for more directness. भाई जो एक बाउंड का चांस आया था वो स्टर्लिंग के टच से आया था. But I agree with you that Sterling has been missing second half of the first half. Let's put it that way. USA is not here to lose, guys. They have been really good and could have been leading by halftime. England is not looking settled in the midfield and neither they are able to attack much. But USA का yes, काफी लोग बोल रहे थे. पता नहीं, मैं दूसरा मैच देख रहा हूँ. मुझे I am disappointed even by USA because I have watched their football. Their football is even more high metal, bro. हाँ, काफी defensively issues होते हैं because let's be honest, they don't have the best defenders even in fullback position. They are more better attacking wise, ना. So I can get that, but I think their midfield and forward line is more energy. I feel that it's a tactic, or I'm I don't know, disappointed. I don't know Rashford, and I said Trent. What do you think about this one, Trent?
Actually, it's not a bad one because Trippier has not looked in the game at all. क्या बोलोगे चिन्मय? I think from Trent, Trent. the thing is, listen, with Trippier, you at least have that defensive solidarity. I think मेरा यही point है. With Trent, of course, but the thing is, do you really want to put yourself out so much in an attacking sense that you give something back in defense? That is the only thing. In fact, I don't know if he goes for a change in formation somehow. If he plays well, what every England fan was asking for. What if he plays Trent in the midfield today in that midfield three? Maybe, who knows? Could bring him on because then with him crossing in or then with him taking the shots, I don't have an issue. But with him at right back going ahead, the way Pulisic is playing right now, what if they go on and score 1-0? 1-0 is all it takes. Yeah. How is Maguire so different? हम लोग बात ही कर रहे थे Nutcrackers during the stream if you were there, but it's Southgate just giving him confidence no matter what happens for Maguire को pick किया. In fact, there were a lot of calls, including myself, कि भाई how did Tomori not get in the squad? Tomori, How did Tomori? Tomori, I thought that. तो वहां पर it was unfair to Tomori. Let's get it right. लेकिन Maguire has actually lived up to Southgate's expectation, not ours. Tomori deserves to be in the squad, but in मेरा यही opinion है. In a way, Ben White has been very good, but I feel I think the spot is Maguire and Connor Cody. उन दोनों का spot is the major question mark जो था in the conversation. I agree with the statement. Tomori should have been part of the squad. I agree with it, and I think he chose Southgate very cleverly chose the public. He took one out of Trent and Tomori. He had to choose one. He took one, made the public happy with Alexander-Arnold, and made the public kind of unhappy with Tomori. So. अच्छा जो भी लोग है ना पता नहीं ईशान इफ यू आर टेनिंग टुवर्ड्स दैट भाई अगेन हैप्पी बर्थडे ईशान लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है ना लॉट ऑफ पीपल माउंट का अगेन आई एम नॉट ट्राइंग कीपिंग द चेल्सी बायस पीपल जेन्युइनली आई बिलीव इट सी माउंट ने जो शॉट भी लिया ना टू बी ऑनेस्ट माउंट का वो दैट्स व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम हिज एबिलिटी टू क्लोज डाउन ऑन पीपल एबिलिटी टू डू सम शिट हाउसरी in a moment where you basically need an extra midfielder, he's your guy. Foden is not bad. I'm not trying to say that. लेकिन far से shot लेना, I would rather in that moment, in that space, I would have Mount. But Foden, if you are playing that way, like how Man City plays, definitely Foden. यार जैसे इंग्लैंड को करना चाहिए ideally, वो करते नहीं There are two different styles, and actually, to be honest, two different players as well in their, in their technicalities, in their. इसलिए मैं बोला it should be more like Foden versus Saka यार. I don't know why is this comparison always. It should. In fact, in the Mason Mount debate, I'd put in maybe Mount versus Mount, Henderson, Gallagher. Mount versus Gallagher. Exactly. I'd put these players in. I don't think I'd put Foden. हाँ मतलब एक चाहिए यार रिमेंबर बेलिंगम आप चाहते हो दैट हिज नेचुरल फुटबॉल कम्स थ्रू इसलिए आई थिंक दैट माउंट और गैलेगर में से एक चाहिए इन माय पर्सनल ओपिनियन एज वेल आई डोंट नो रियली नॉट द चेल्सी बाय जस्ट ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ इट हैज बीन एन इक्वल गेम बट वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम इंग्लैंड दैट्स व्हाई यूएसए इज लुकिंग बेटर हाँ एट द सेम टाइम यू कैन आर्ग्यू स्टर्लिंग का मैं एग्री करता हूँ दैट स्टर्लिंग may not really last say an hour he might he's come not off. going to I don't think he's going to. Yeah भाई रिचार्लिसन का सेकंड गोल where do you rate it Chinmay मतलब वर्ल्ड कप गोल्स इफ यू आर थिंकिंग मतलब लास्ट वर्ल्ड कप में बेंजामिन पवार्ड इफ यू रिमेंबर ग्रेट वॉली दैट इज स्कोर्ड अगेंस्ट अर्जेंटीना आई रिमेंबर सुपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग टाइमिंग भी बहुत सही थी 2 ऑल कराया था उसने बहुत अच्छा टाइमिंग था that goal tha there I don't know Richarlison's goal is right up there among the top Right World there. Cup Ronaldinho's goal 2006 mein free kick everyone remember and I think it's kind of funny coincidence Richarlison R9 coincidence you have they're saying R9 regen Richarlison नहीं coincidence नहीं है Richarlison आप देखो इसका celebration भी he actually does a Ronaldo any bench who deserves to start or any change in formation in players you think I think Aditya I would actually go with maybe Sterling coming off that's the only thing I would go with मुझे नहीं लगता जरूरत है to change much again Mount the reason मैं तो चाहता हूँ भाई उसको रेस्ट में as a Chelsea fan he needs more rest because he plays literally every minute of every club and country that he plays for right भाई लेकिन honestly maybe when his legs are kind of giving it away by then you get on a Gallagher you get on a Foden for a Sterling that would make sense to me or at the same time maybe आप सोच सकते हो I don't know यार मतलब Rashford as well क्योंकि यार Foden can play on the right hand side
and I'd put Saka can Rashford be on on the the left. left hand side, I'd play and you Rashford can on the do left. two up top, right? You never know. Vinny is my pick for Golden Ball as well. Arey Faraz, nice. Maybe not that I'm a huge Real Madrid fan or something. It's just my gut feeling. Neymar was heavily targeted last day, fouled 9 times. That's really tough. भाई नेमार एंड डाइवर जिनमें हम काफी बात करते हैं जस्ट लाइक स्टर्लिंग एंड डाइवर यू नो दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट बट 2018, big one. somewhere down the line you think वो it goes against Neymar, right? Because at times he's actually like Because Hazard used to be. at the end, what I think is, जो मुझे कल दिख रहा था लाइव मैच में, that stat is right. He was fouled the most. Sometimes referees get influenced by that stat or by all this noise. फिर क्या होता है? Even the real fouls don't get given. A person like They are Neymar humans being after fouled all. 9 times. You look at his ankle, the photo which came out. या एग्जैक्टली उस्मान बोल रहे हैं यहाँ पे नेमार इंजरी लुकिंग सीरियस, he'll miss the वर्ल्ड कप अगेन. मैंने जो देखा है स्टेटमेंट टीटे का, the latest update is that he's going to miss all the group stage games, but he's going to be fit for the knockout. That is the latest update. टीटे का वही है. टीटे has definitely confirmed that I believe so. मैंने again I have not heard him but I've just seen that Sterling has been good. He has had, I think, initial 10 minutes he was good. Then he had that one moment where it could have been an assist for Mason Mount. Apart from that, I have my doubts. भाई second half शुरू हो रहा है, सब लोग Matata United बोल रहे take out the Chelsea players. I expected that Matata United, much love to you bro, but पुलिसिक खोल के रख देगा उसको. बहुत अच्छा पॉइंट है मैसीज गुड. I hear you. जस्ट Vinicius इमेजिन style. जो होता है लिवरपूल चेल्सी मैचेस में अगर वो खेलते हैं भाई. रीस जेम्स तो यार क्या ही तो बोलो यार, वो तो नो ब्रेनर था. रीस जेम्स वुड हैव स्टार्टेड ऑल द गेम्स अगर फिट होता तो. बट एनीवे भाई सेकंड हाफ प्रेडिक्शंस. और भाई चिन्मय और एवरीवन इन द चैट प्लीज, He just kicked him. पता नहीं भाई, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ भाई सब लोग प्लीज मुझे याद दिला देना 46-20 में याद दिला देना. मुझे टाइमर करना है वापस से शुरू, ठीक है? तो प्लीज मैं हमेशा सेकंड हाफ में भूल जाता हूँ क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट एट दैट पॉइंट इटसेल्फ. Mason Mount is more familiarized with Southgate's tactic than Foden is. चलो देखते हैं. मैं अभी रेडी हो रहा हूँ टाइमर के लिए. बट हैव दे चेंज समथिंग? आई डोंट थिंक सो. टैक्टिकली आल्सो आई सी द सेम बोथ द सीन. वो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था अभी के लिए. चलो मैं अभी 46-10 हुआ है ना. चिन्मय आपका कितना हुआ है? 46-14. अरे भाई हाउ इज चिन्मय 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स अहेड ऑफ मी? ये कैसे हो गया भाई? चिन्मय इफ यू कैन, आर यू कंफर्टेबल टू शेयर कौन से लोकेशन में हो? व्हिच सिटी आर यू इन नाउ? I'm in Pune. I'm in Mumbai right now. Pune क्यों बोल रहा हूँ? Yeah, 46-29. You can start. You can start. You can start. अरे भाई लेट नहीं हो जाऊं. चलो शुरू हो गया Perfect. राइट ऑन टाइम. I'm in मेरा Mumbai right मेरा आपसे स्लो है ना, तो ये करेक्ट है. अच्छा है. I don't know, maybe the Mumbai का if something, you know, if पता नहीं यार TVs ये are क्या है, मतलब faster. स्पोर्ट्स 18 भाई ये तो दोगलापन हो गया यार. स्पोर्ट्स 18 कोई नहीं. पुदन यार बिल्कुल Ambani, फिटमेंट के लिए चीज होती Ambani है. bhai is giving, you know, home city more priority. I think. I don't know. पेप स्टाइल एंड कोचिंग वही है. इट्स अबाउट पेप एंड साउथगेट में भी आप कंपेयर कर सकते हो. लेकिन वही आर्ग्यूमेंट वो भी है ना, पुदिन मताटे यूनाइटेड एवरीवन द हाउस, कि यार साउथगेट हैज द पर्सनल टू प्ले द पेप वे बट ही इज नॉट पेप, राइट? लेट्स गेट इट ऑनेस्ट. बट I do rather give Bellingham a bit more defensive England role. से pressing ज़्यादा दिख रही है. I don't know if that is something that is being instructed, but pressing has been more intense rather. I at hope least it in is because otherwise भाई आप लोग को उठाना पड़ेगा मुझे. I'm like no ways man. And thanks to Chinmay for being here यार, and everyone in the chat. Again, hopefully आप लोग सब like share subscribe करिए. Yes, there might be people who are internationally watching, so that helps as well. Today I missed Chilwell and Reese. Would you have started Chilwell over Luke Shaw, Chinmay? No bias, but I feel Shaw for England and Shaw the way he's playing right now, defensive and Form में attacking तो wise. I can hear you, but a fit Chilwell, bro. I would have gone for Shaw and James. I'm not joking. Shaw and James would have been my actual pick. James And तो बहुत पूछा ही नहीं मैंने इसलिए. ओहो, that was well blocked by stones, I must say. छक्का मारा यार, वापस एक बढ़िया चांस. मैकेनी को बहुत सारे आ रहे हैं. अरे प्रोफेसर यूनाइटेड इन द हाउस यार, गुड मॉर्निंग. a lot of हाउ आर यू? people are forgetting England had a Scotland draw last year in the Euros. 0-0 group stage second game. Yeah, everyone remembers that game.
लेकिन So वो boring some snooze they have fest, history as well, no? boring snooze fest, and they went on to the finals. History. Oh बिल्कुल no. बिल्कुल भाई कुछ कर दो यार, कुछ ड्रामा चाहिए अब गेम में भाई। प्रोफेसर यूनाइटेड इन द चैट यार, पीपल डू, इन केस आपने नहीं चेकआउट किया, डू चेक हिम आउट एज वेल। उनका भी चैनल है, आई थिंक इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। भाई आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हो क्या, प्रोफेसर यूनाइटेड? सॉरी यार, मैं वर्ल्ड कप स्ट्रीम्स आपके देख नहीं पाया, डू लेट मी नो कौन सा टीम सपोर्ट कर रहे हो, और आपकी प्रेडिक्शन भी बता दो। थैंक्स यार, लाइक्स काफी कम है आज, आई डोंट नो। वही है ना, कभी कभी मैच इतना अच्छा होता है कि पीपल लाइक, अरे अर्जेंटीना, ओके इंटरेस्टिंग। अर्जेंटीना, दैट्स अ गुड Oh, कॉम्बिनेशन। Sterling. मैनचेस्टर एंड अर्जेंटीना, अरे व्हाट अ टर्न। स्टर्लिंग मैन, ही हैज इट इन हिम यार, मैं बोल रहा हूँ ना स्टर्लिंग। मैं आई नो हु आई कंपेयर्ड हिम विद। ईरान के गेम में, इफ यू केयरफुली, आई कंपेयर्ड हिम विद जोकोल। In the Iran game, he wasn't playing like a winger. He was playing that, that half space in The the role Joko used to play for attack. Chelsea. जो कोल ऑफ इंग्लैंड, जो कोल जो रोल इंग्लैंड के लिए खेलता था 2006 में, इफ यू रिमेंबर, ही वाज 6 द World Cup. मेन Yeah, क्रिएटर। ही वाज द yeah. मेन क्रिएटर इन 6 द World इंग्लैंड Cup. टीम Yeah. 2006 वर्ल्ड कप। ठीक है, ही वाज एक्स फैक्टर। तो और उसने अच्छा भी किया था काफी। तो इन इंग्लैंड ही यूज्ड टू प्ले दैट, मोर लाइक अ between the winger and cam role. He used to play that role, the two number 10s वाला ना। It used to be either Lampard Jokol and Gerard Jokol, that kind of thing. लेकिन इंग्लैंड लग तो रही है थोड़ा सा यार, थोड़ा इन द ग्रूव लग रही है सेकंड हाफ में, आई मस्ट से। एज I सून don't एज know. आई Maybe. से दैट, हक दिया माउंट ने। दैट्स व्हाट I हैपेंस। think. I think Southgate must have got into them. अरे भाई, भाई प्रोफेसर यूनाइटेड, अर्जेंटीना एंड मैनचेस्टर, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पर एक क्विक ट्रिविया पूछूंगा आप लोग से, गूगल मत करना भाई, एवरीवन वाचिंग एज वेल एज चिन्मय। भाई कैन यू नेम, कितने बोलूं मैं, कितने पूछूं, तीन, तीन तो मुझे भी याद नहीं है, तीन मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स हु आर अर्जेंटाइन। बोल दो। हाँ बोलो प्लीज। एक तो याद लीचा आ हो गया गया, मुझे। लीचा मार्टिनेज हो गया। वर वर मार्क वर 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 तो हाँ, वेरॉन नॉट हो गया। करेक्ट। हाँ वेरॉन, गुड वन, वेरॉन हो गया। यू गॉट मार्कस रोहो हो गया। ऑफ कोर्स। एंड थर्ड थर्ड के बारे में सोचूंगा। अरे नाइस टैकल भाई यूएसए I यार। feel like I have the answer. Um, रोहो इज करेक्ट, यस। अगेन इसलिए मैं लिचा और गन्नाचो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज आई सेड हु वर। I remember a snake, Mr. Tevis. हाँ, Remember the snake, ऑफ कोर्स। Mr. और मैं Snake. एक्सपेक्ट कर रहा था, यू नो व्हाट पीपल फॉरगेट, भाई सर्जियो रोमेरो। हाँ, Romero. Oh, how could I forget यस, our टेवेज इज करेक्ट, एब्सोल्युटली। Europa winning keeper? मैं एक्चुअली आई वाज गोइंग टू आस्क, फोर, मैं बोला यार मुझे चार ही याद थे, You और किसी can't को याद है you तो बोल can't दो forget यार। Veron. To be honest, Veron तो मेरे मन में रहता ही है। वेरोना Veron रोहो तो तो डेफिनेटली यू कैन नॉट फॉरगेट। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं थोड़ा क्विज मोड में आ रहा हूँ, पता नहीं क्या, लेकिन भाई एनीवन इन द चैट, और भाई अगेन चिन्मय, साथ साथ में मैच देखते देखते थोड़ा मजा मुझे के लिए बस, मैनचेस्टर यूनाइटेड पैनल और चैट दोनों दिख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई। थ्री यूरुग्वायंस, थ्री नहीं, चार यूरुग्वायंस, थ्री, अच्छा थ्री, थ्री बोल दो, थ्री यूरुग्वायंस three. who had played। Cavani, Forlan. अरे Again, भाई वो तो third इजी है। one. Cavani हो गया, Forlan हो आई गया। होप थर्ड वन राइट है, मेरे मन में एक है, शायद वो है करेक्ट है। हाँ, एक आई थिंक है, लेट मी जस्ट चेक इट। मैं मेरे मन में वो इसलिए गूगल कर रहा हूँ, मेरे 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 मन में है एक, आई थिंक ही हैज प्लेड, लेट मी जस्ट चेक इट अप। यस आई एम राइट, हाउ कैन आई बी रॉन्ग ब्रो, हाउ कैन आई बी रॉन्ग। So there is one player, but बात ऐसी है फॉरलैंड कि कवानी। नहीं, but बात ऐसी है, he hasn't played much, and I saw him on TV yesterday. I saw him on TV यस yesterday. यस यस, ही इज दैट Yeah. प्लेयर। And the वरेला, second, वरेला I'm वरेला। not even joking. I know I got reminded through that, but yesterday I remember searching him on my phone, and I thought कि हाँ ये तो था क्लब पे, हाँ, Varela. वरेला एग्जैक्टली। भाई पेलेस्ट्री, इज ही स्टिल ऑन यूनाइटेड बुक्स बाय द वे?
2017, I think he left United. Under Jose, he left. नहीं Pelestri is still on United Oh, books, so Pelestri is. Pelestri I will not count. Pelestri. I was talking about Varela. I'm sorry. Pelestri is, but then again, he plays. He still plays for United. So और प्लस वो सीनियर कैप नहीं मिला उसको यूनाइटेड के लिए. हाँ. बिल्कुल Garnacho में भाई. मिलता है तो. चलो we'll come to the match. भाई, how did you like my trivia? Short trivia. अच्छा था. I just saw United in the panel, United in the chat. भाई चेल्सी फैंस बोल रहे भाई चेल्सी का भी दो. भाई Who Am I चेक करिए. चिन्मय तो देखे भाई Who Am I सीजन 1. चिन्मय सीजन 1 याद है? Who Am I का ओल्ड वाला. I remember. I think it was one of the better shows. मतलब talk TV shows तो काफी आते हैं. But it was actually competitive because it was actually people I have seen watching with you. So it is not. I know it is not scripted per se. So actually it was तो वही ना. quite fun to watch. तो ऐसे मैंने टू बी ऑनेस्ट ये जो मैं क्वेश्चन भी पूछा ना, ये मैंने कहीं देख कर नहीं पूछा, जस्ट मन में, क्योंकि वी हैव वॉच्ड फुटबॉल नो विद दैट. तो हु एम आई सीजन 1 फॉर ऑल ऑफ यू. यस, सीजन 3 काफी ज्यादा एक्साइटिंग है जो चल रहा है अभी भी सेमीज और फाइनल्स. लेकिन सीजन 1 और सीजन 2 ना, जो भी मैंने देखा है फुटबॉल 25 सालों से, वो सोच के मैंने बनाया था. तो इट वाज लाइक आप गूगल भी नहीं कर सकते हो वो सब चीज. आप देखना जो भी लोग मिस कर रहे हो, हु एम आई प्लेलिस्ट देखिए सीजन 1 सीजन 2. Both Gavi and Frankie de Jong have won the man of the match in the respective matches. Only Pedri is remaining. This tells you how good the Barca midfield is. भाई लेकिन आज फ्रेंकी de Jong को सपोर्ट क्यों नहीं मिला भाई? मेसी इज गोट. थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक बोलते, क्या बोलते, जहाँ पर इतने सारे साइन कर देते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, एक टर्म है ना अपना, फॉरवर्ड होता है कि यार पेटिशन, दे स्टार्ट अ पेटिशन. Petition. तो पेटिशन एक करने वाला भाई कि यार डच में टीम में ग्रावेनबर्ग क्यों नहीं है, लाओ भाई कहीं ना कहीं से. मॉन्टेनेग्रो प्लेयर फ्रॉम मैन सिटी. अरे बिल्कुल यार, वो सैविच. Jovetic. Jovetic, sorry, not Savage. Savage is Serbian, right? Jovetic or Jovetic. I don't remember the Jovetic, हाँ. Stephen Jovetic, definitely. Yeah, but he was हाँ, you're correct. एक सेकेंड भाई, सैविच सर्बियन है क्या? Savage Serbian है. अच्छा चलो, I got confused then, my bad. Savage. लेकिन हाँ, Jovetic is correct. सेनेगल कोच और स्नूप डॉग. अरे भाई दैट्स अ गुड वन. भाई कल हमने गाना के गोलकीपर को नाम दिया था अशोक डिंडा, सेनेगल के कोच. बट टॉकिंग अबाउट फुटबॉल एफसी ऑन अ सीरियस नोट ना, डिड यू नो सेनेगल इन द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड कप बवाल मचाई थी, बवाल. 2002 उसके बाद एलहाजी ड्यूफ आए थे प्रीमियर लीग में. लिवरपूल फैंस कैन नॉट फॉरगेट हाउ कैन वी साइन दैट गाय, बट दे डिड. एंड इनफैक्ट पता ही था क्या किया उसने. ही हैड अ लॉट ऑफ एटीट्यूड इश्यूज. But in that squad, people forget the main thing. Who was the captain? It was Alou Cisse, who is today coach of Senegal. Again, एक और trivia. But anyway, Snoop Dogg is new nickname. Snoop Dogg is the new. बिल्कुल भाई, फुटबॉल एफसी नामकरण हो गया उसका भाई. स्नूप डॉग ही बुलाएंगे आज से, ठीक है. सेनेगल के कोच को तो वो बिल्कुल यार, वो उसको टोपी के बगैर देखा ही नहीं मैंने आफ्टर प्लेइंग डेज. एक सेकंड. अरे गोल होता है यार. बेलिंगहम डिड वेल. Bellingham did well in that moment to get that. भाई लग रहा है अभी यूएसए जान गई है कि इंग्लैंड भी अटैक कर रही है, तो भाई वी कैन नॉट लेट दैट हैपन. नहीं तो इट विल बिकम व्हाट हैपेंड टू जर्मनी. देखो get Foden or Rashford on, win the game. Dest being pressured by both Chelsea players. लेकिन आई थिंक भाई एसी मिलान के साथ तो चेल्सी डिड वेल अगेंस्ट डेस्ट, बट आई थिंक टुडे डेस्ट इज डन डिसेंटली. नहीं, सर्जिनो डेस्ट इज लाइक, आई डोंट नो यार. मतलब भाई बारसा फैंस आप बताइए यार, सर्जिनो डेस्ट हाउ डू यू रेट हिम डिफेंसिवली? मतलब सच में इज ही अ इश्यू और इज जस्ट द कॉन्फिडेंस इन मिलान दैट इज सो बैड? अच्छा है भाई. Pulisic balling, bro. Pulisic again. Man, he's balling, bro. नहीं यार, you know what? I have a very strong opinion that Jude Bellingham should stay out of England. नहीं होगा नहीं वो, लेकिन I think कहीं ना कहीं मुझे लगता है that is what something which is helping him. That is the different way of a midfielder जो आता है ना when you are playing in Europe. So I feel he has it in him by default. जो ओवन हार्ग्रीव्स के पास में था, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा Sven Goran Eriksson missed a trick by not playing Owen Hargreaves enough when he used to play for Bayern Munich. As much as I'm a Chelsea fan, मैं तो बोलूंगा अपने प्लेयर्स के लिए, लेकिन Owen Hargreaves USA is actually getting forward now.
That's a fault. Chelsea should be hopefully. We need that kind of a player who can do bit of everything. लेकिन I don't see him coming. I think he's even more hyped than Chouameni. भाई Chouameni नहीं ला पाए हम लोग तो चलो कोई नहीं. Declan Rice stepping back in centre back for a time being, but I think he's come back to CDM. Ronaldo to Chelsea, क्या बोलते हो चिन्मय आप? I thought when you're going to ask me about this. हमने बात ही किया था बहुत यार समर में मैं एक्साइटेड था, अभी नहीं हूँ सच में बोलूं तो एक्साइटेड. Honestly, honest opinion है. Because already इतने प्रॉब्लम्स है यार, with all due respect to him, he is a goat. चिन्मय प्रॉब्ली आपने वीडियो देखी है मेरी, यूनाइटेड रोनाल्डो ने बोला उसके बाद 2 डिफरेंट टेक्स्ट थे, बट ऑनेस्टली मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल है उसमें. मुझे लगता है दैट चेल्सी में प्लेयर पर ऑलरेडी एन इशू. रोनाल्डो विल बी फार बिगर देन पॉटर यार. या तो एंड फिर वापस वही बात हो जाती है मैनेजर की, यू नो. भाई चिन्मय का चैनल यही है यार, इट्स कॉल्ड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. हाँ, दूसरा चैनल भी उनका ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. डेफिनेटली सब्सक्राइब टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस एंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. लेकिन चिन्मय डेफिनेटली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑलवेज हैव यू, बट थोड़ा टाइमिंग का इशू हो जाता है यार. फतेह भाई, जस्ट टू लेट यू नो भाई, फतेह नेक्स्ट वीक से आएंगे तो होपफुली विल हैव अ स्ट्रीम. फतेह प्रसन्ना चिन्मय एंड मी, द क्वाड्रेंगुलर जो कॉन्वर्सेशन होते थे, we'll have it again sometime next week hopefully. Dest is a very good offensively, but he is inconsistent with his defensive abilities. Agreed, he would be good as a right wing back with a back three. Exactly, bhai. Bessie is good. I just wanted someone to second that opinion. मतलब कॉर्नर लिया भाई. भाई एक सेकंड, why is Pulisic literally doing everything at USA, man? I think he should be attacking in the attacking box, I would say. Why is he taking set pieces? Kane, Strange. wow. That's the fastest I've seen Kane run in. उससे याद आया, पता नहीं यार you saw it or not, नेदरलैंड्स और इक्वाडोर के लास्ट के मिनट्स में Gakpo was defending, bro, before he got subbed. Unfortunately I didn't catch that. लेकिन वही है, I think he is better. You need to have him at the end of things, not creating. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. Timothy Villa, yeah, he's good, but again, I think they're a little bit inexperienced यार when it comes to finishing. USA का ये issue है. Well, you get, I can't remember the team. Wait, I think it was Canada. Yeah, they created so many chances against Belgium. So many. एक finisher होता, it would have been, Canada could have stolen the game and actually gone on to beat Belgium comfortably. बहुत ही अच्छा. They had a lot of chances. They had the penalty. Oh, close. नहीं. I think Maguire did well. उससे पहले भी एक इंटरसेप्शन हुआ था शायद. Is it allowed to intentionally hit ball for corner? Yeah, I don't think there's any rule against that. हाँ, मतलब डिफेंडर्स करते ही है बहुत बार, क्योंकि डिफेंडर्स डोंट वांट टू टेक अ रिस्क एंड देयर नहीं कॉर्नर दे दो भाई, डोंट इवन कम क्लोज टू द बॉल. दैट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स. इन फैक्ट वो होता है. यूनाइटेड इज लुकिंग टू साइन मेम्फिस डिपाई ड्यूरिंग द विंटर विंडो. इन फैक्ट भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यूज़ चिन्मय? They're saying Depay, they're saying Gakpo, हर नेदरलैंड्स का हर एक प्लेयर टेनाक को चाहिए apparently. देख लेते हैं अभी, let's give it a वो तो लेजी जर्नलिज्म है, लेकिन जस्ट गिवन अ चॉइस you would have more experienced player or youngster, because considering you have Garnacho playing in that role, remember leftish side. I think Gakpo looks very exciting. I would take him in a heartbeat. I'm not joking. I would take Gakpo in a heartbeat. And he has that finishing ability. That's the best part. He's matched or outscored, I think. Outdone Haaland in goal contributions already. He's outdone actually. Correct. Again, Eredivisie, but still यार बहुत अच्छा खेलता है यार बंदा. As much as वो एक spark है ना, spark plus finish. Garnacho is very good, but I think again
I don't think yet. Would you say Garnacho is a starter? By the way, पुलिस एक और corner ले रहे हैं. Well, now, I don't know what they're doing. एक तो चिन्मय का 4 सेकंड आगे कैसे है मेरे से पता नहीं भाई. ये तो मतलब ढूंढना पड़ेगा इसका रीजन. तो ये कैसे हो गया आज? मैं Funny thing, जनरली I सबसे asked आगे you रहता हूँ today, भाई. I asked you, हो सकता है मेरा stream lag हो. Today I asked you specifically. So will it be okay? I don't know how it's working out. चिन्मय like come prepared यार. और से चिन्मय has a as in what is it crystal ball in front of him. I don't know. United is looking to sign Memphis Depay. तो ले लिया था हमने भाई. एक और कॉर्नर ऑन द राइट हैंड साइड आया. अब वापस खाली पुलिस एक ही क्यों लिए जा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया. आई थिंक ही शुड बी वन ऑफ द पर्सन हु शूट्स ऑन सेकंड बॉल्स इन द बॉक्स इन माय पर्सनल ओपिनियन. अगेन जो भी जुड़ रहा है भाई लाइक्स कर दीजिए. मैं सुना लाइक्स का मुझे आज स्ट्रीम में भाई. कैन वी गेट टू 100 लाइक्स? कम ऑन, लेट मी एक्ट भाई. हमारा एक टारगेट है प्रीटी मच. जितने लोग तो देखेंगे ही, सब लोग लाइक कर दीजिए प्लीज. सर्टनली हैव द स्ट्रीम, डू नॉट फॉरगेट दैट. काफी बार हम मिस करते हैं. हेंडरसन कमिंग ऑन. व्हाट इज हैपनिंग ब्रो? अच्छा है. साउथगेट को -1 ऑल कराना है. गुड. I like यार व्हाट इज दिस? आज दोनों ही लुई वैन गाल साउथगेट हक दिए यार मैनेजमेंट में. व्हाई वुड यू गेट हेंडरसन एट दिस पॉइंट? Pulisic, yes, he's having space. Defending it's too negative in my personal opinion. I don't नहीं know. यार हंश उसने बता दिया. I never got a call from Chelsea. That doesn't mean that वो बुला रहा है Chelsea को बुलाए. वो बहुत बार बोला है that I'm happy in Madrid. And if Ancelotti wants him, he'll stay there. And I think he is one of the members. अभी भी remember. Grealish is coming on. Jack. दोनों आ रहे हैं शायद लगता है. देखिए I would say that Ronaldo to Real Madrid looks like it's not happening. So I don't see Rodrigo, Hazard are the backup strikers. Remember. हाँ यार ईशान God, who's in the middle? There's no one. Who is he cutting back to? I don't know why. केन क्रिएट कर रहा है तो भाई कौन हो? इसलिए आई एम सेइंग ना, मैं तो बोल रहा था भाई रैशफोर्ड को लाओ, डायरेक्टनेस आएगी थोड़ी. ईशान पूछो यार क्यों नहीं. McKennie यार, what a game he's had यार, I must say. As much as Pulisic हम बोल रहे हैं ना, I know McKennie missed chances, but the guy has been everywhere यार. Midfield, right wing, वही सब जगह है McKennie. Hendo and Grealish. Oh, they're doing the Iceland clap. I don't know why. हाँ अब तो यार सब लोग ही करते हैं. हुआ करता था, मैंने पहले वहीं देखा था. अगेन आप देखो काफी सारे ऑप्शंस थे इंग्लैंड के पास, बट दे आर गोइंग फॉर हेंडरसन एंड हेंडरसन भाई एंड ग्रिलिश. ओके चलो, लेकिन किसके लिए आएंगे यार? Maybe Sterling and Mount. Could be. Let's see. Mount, but then क्या होता? 3 defensive. I don't know. वही they'll go with a 4-3-3 ना, proper the Liverpool style. इसलिए हेंडरसन आ रहे हैं. They should get for Rashford. लिवरपूल फैंस बोल रहे हैं भाई बर्मिंघम सिटी में जो खेलते थे भाई, बेलिंगम might play for Liverpool again, who knows. अच्छा In that style, in this ऐसे ही match. ख्वाब तुम देखो और अच्छा है. देखते यार, मतलब मेरे ख्याल से एक प्रॉपर वॉर होगा उसके लिए. 2003-05 Rayo Vallecano, 40 appearances, 28 goals, played for 13 clubs and is still currently playing. 2003-05 Rayo. अभी तो रायो में फाल्काओ है और स्टिल प्लेइंग भी है. 2003-05 आप एक क्लब का नाम अगर ईशान भाई अगर आप बोल पाओ, वन अदर नहीं पहले सोचते हैं ना, थोड़ा पहला सोचते हैं यार थोड़ा. तो जो अभी तक खेल रहा है ना रायो, तो आई एम गेसिंग इज इट 28 गोल्स प्लेड फॉर 13 क्लब्स. 13 क्लब्स वाकविन में बोलने वाला था, हो सकते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूट हो गया भाई पीपल. 40 अपीयरेंस 28 गोल्स, स्ट्राइकर ही यार, वाकविन नहीं है. रायो 2003 से 5. अरे यार मेरा दिमाग नहीं चल रहा है. स्पेनिश है. मैं तो गेस कर रहा हूँ स्पेनिश या लैटिन अमेरिकन होगा, इज व्हाट आई एम गेसिंग. बेलिंगम ऑफ. बेलिंगम ऑफ. या वाओ, माउंट इज ऑन यार. भाई माउंट को खिलाना है इसको कैसे ना कैसे. टू बी ऑनेस्ट बेलिंगम डिड नॉट हैव इस इतना अच्छा मैच अभी तक. वन मोर क्लब.
One any other club, Ishan? I think I'll be able to help you. एक क्लब बताओ यार कोई भी, एक क्लब का बोल दो सेकंड या भाई. थर्ड क्लब बता दो. एक any one club. I'll अगर स्पेनिश है तो मेरे मन में एक नाम आया है, but I'm not अभी sure. तक खेल रहा है जो, मैं वॉकविन इसलिए बोला था, मतलब 19 years bro the guy has been playing and रायो के लिए इतने गोल्स मारा तो already he was like already. इसलिए वो 19 years वाली बात को देख के मेरे मन में एक प्लेयर का नाम आया है, but the thing I don't know about the club because अगर वो आदमी है तो वो मैन सिटी में खेला है एक बार. Oh right you're right actually. I think he might be the guy. सेविया, क्या नाम है? it's सेविया है लिखा है I think करेक्ट उन्होंने. वही है भाई, उसका नाम कैसे? हाँ नेग्रेडो यार भाई, नेग्रेडो भाई, चिन्मय ओपी यार, वेल डन नेग्रेडो ही has to be the guy. खेला था, if I'm not wrong. I just don't remember कि वही था कि नहीं. वो I think नेग्रेडो ही आंसर, नेग्रेडो है. अच्छा ईशान बोल रहा है नेग्रेडो है राइट. ऑस्कर देखिए अंश एक चीज मैं बोलूंगा ऑस्कर के लिए, बीइंग अ चेल्सी फैन, एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट मैं बोलूं, ऑस्कर्स बेस्ट गोल फॉर चेल्सी came in his very first match for Chelsea. Isn't it ironical? Penalty almost नहीं हुआ. Mount kept his feet. I think honestly there's two ways to look at this. आप बोल अंकित भाई प्लीज. नहीं मैं वही बोल रहा था, देखो there are two ways exactly. देखिए ऑस्कर जैसे शुरू किए थे ना, if Oscar would have been given that freedom to play that way, he would have been the player, maybe I'm just putting a big shout यहाँ पर, but maybe like a Deco was for Barca. He could have been that kind of a player. Problem is when problem नहीं बोलूंगा, it helped us win the league, so I would not call it a problem. When Mourinho came second time, Mourinho made him into a Mason Mount kind of a player, which is nothing wrong. Even Mason Mount is brilliant, but he did not focus totally on his instinctive skills itna. It was a lot of work rate etc. उसके लिए I think somewhere down the line he kind of got confused and he lost his एक है. Plus secondly एक एम्बिशन भी होता है. आई थिंक द गाय जैसे हजार्ड ऑस्कर का वही प्रॉब्लम था, पीपल से दैट they didn't have the ambition to go to the right to the very top. I think the biggest thing is a lot of people are not looking at is he was from Brazil. I think ये अभी एंटनी ने काफी recently बोला है that एंटनी के goals, एंटनी का ड्रीम है, एंटनी का ड्रीम था to win the Champions League and all of this. But I think he's very clearly said, and which is kind of true, when you're in Brazil, when you're from the favelas or when you're from a very poor part of Brazil, sometimes making money for your family or might be for yourself might be the goal. He got to a top level, maybe he thought it would be the last contract I'm offered. It's a very good point, क्योंकि आपको पता नहीं परिचित में, he actually he adopted a village. Yeah. So वही है, and personal ambition. He was not that well to do in Brazil. His family was not doing that well. So I think at one point of time he thought, maybe I won. He won the Premier League with the Chelsea in 14-15 if I'm not wrong. Yeah, we won the Premier League with him. यूरोपा लीग जीता है भाई, प्रीमियर लीग जीता है, लीग कप जीता है. And maybe he thought maybe it's time for me to earn. FA कप पता नहीं जीता, FA कप नहीं जीता शायद, लेकिन हाँ ऑनेस्टली लेकिन एक और थर्ड रीजन भी है यहाँ पर, इफ अंश इफ यू मे हियर व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर द मैच टू गेट इवन मोर एक्साइटिंग, दैट वील हैव एक रीजन अबाउट द फॉर्मेशन, दैट 4-2-3-1 is kind of not very common these days. Your Oscars, your Ozils, your Godzes are that's why they are kind of gone. Matas, देखो, they are, in my opinion, they are best in front of the double pivot. That is what their best position is. It's not very common. I know England abhi, you can argue that England are playing, why not? But again, I'm talking week in week out वाला. 4-2-3-1 Mourinho खिलाता था, बहुत सारे टीम नहीं खिलाते आज के दिन. टॉप टीम समथिंग है, तो टारगेट नहीं था. अरे यार अच्छा किया है भाई ग्रिलिश ने ना. पता नहीं यार, इज इट मी, इज इट बिकॉज आई हैड अ लॉन्ग डे, बट आई फील दैट दिस गेम रिक्वायर्स सम मैजिक यार. इट रिक्वायर्स सम, इट्स लाइक टिपिकल स्टेलमेट लग रहा है मुझे, लाइक एटलीस्ट पुलिसिक वाज क्रिएटिंग बेटर चांसेस. England are trying to
डू अ चेल्सी, एकदम वर्क इन, एकदम परफेक्ट गोल ट्राई कर रही है और अच्छा डिफेंसिव फॉर्मेशन है यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूनाइटेड का भी, यूनाइटेड बोल रहा हूँ, सॉरी, यूएसए का। भाई यूनाइटेड चैट में यूनाइटेड पैनल में तो यूनाइटेड याद आ रही है यार, पता नहीं क्यों। या अंश, आई होप यू कैन रिलेट। बिल्कुल। इमेजिन यार, इसके बाद में मुझे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। चिन्मय, आर यू अप फॉर दैट? फॉर इंग्लैंड नेदरलैंड्स वाला भी करेंगे, पूरा दिन का करेंगे रिव्यू। नींद आ रही है अंकित भाई, इन लोगों ने काफी जगह भी नहीं रखा इन लोगों ने। नहीं भाई, चिन्मय को वापस लाना भाई पैनल में, ऐसे थोड़ी होता है। तो चिन्मय, अप टू यू यार, टोटली। हम तो डेफिनेटली पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज दैट। चलो भाई, मैकेनी विद द बॉल। देखो वही लग रहा है ना, जो मिल रहा है ना बॉल, दे आर डूइंग बेटर विद इट। आई थिंक लेट्स सी हाउ दे जैक। मैं कल भाई अर्जेंटीना का मैच कितने बजे सब लोग? 12:30। चलो भाई, यही बाकी था। और एक तो टाइमिंग्स ना, फिर भी थोड़ा बेटर है इस बार टाइमिंग्स, कंसीडरिंग इट्स इन एशिया। एक्चुअली बहुत ही क्लस्टर्ड हो गया ना, बिकॉज ये जनरली होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5-6 हफ्तों में होता है, इस बार 4 हफ्तों में कर रहे हैं ना टूर्नामेंट। Every day, चार match, every time I, wake up from my sleep and there's some match going on. So every time a notification आ जाता है, he scored, this scored. आज तो, I wanted to watch at least 2 or 3 games. This is the first game I'm watching today. अरे अंश, यूएसए ना देखो, दे आर, कैसे मैं समझाऊं, जैसे आई नो मैं कंपेयर कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। रियल मैड्रिड आप अगर देखे हो ना ओवर द इयर्स, रियल मैड्रिड डोंट प्रेस यू ऑल द टाइम। Real Madrid has those moments where you know where they'll press. USA are actually playing that way. I'm not going to say utna quality hai, but you know what I mean, right? In terms of tactics. So I think selective pressing is what they're doing. In fact, even England, इसलिए तो stalemate है आज। ऐसा नहीं है कि दोनों टीम्स प्रेस कर रहे हैं। यूएसए एक्चुअली कर सकती है, ज्यादा करते हैं बहुत विद दिस यंग स्क्वाड। भाई केन विद चांस है कि, अरे नाइस, अरे गोल किक यार, गोल किक था ना, गोल किक सब्स्टिट्यूशन। भाई कौन आएगा बोलो? भाई एरनसन कमिंग, मैं तो बोल रहा था एरनसन इज गोइंग टू कम, एरनसन कमिंग फॉर यूएसए, दैट वाज नीडेड। Rashford's out. Rashford's on, yeah. But I hope they stick on with Kane and don't sub him off here. Let me just show the screen एक बार, सब लोग देख लो यार, टैक्टिकली देखते हैं। भाई मैकेनी गोइंग ऑफ, हाँ बहुत भागा है बंदा, fair enough. No, but he has run his socks off. Yeah, I can understand why. Why? How is this website giving 6.7 to McKennie? Because of his misses, maybe, I don't know. बंदा बहुत अच्छा खेला यार। Pulisic and McKennie have been the player of the match for USA for me, if you ask me. लेकिन okay, so even they are making 2 changes looks like, और आधे पता नहीं। यहाँ पर देखते हैं इंग्लैंड का। अगेन रिमेंबर, स्टर्लिंग इज ऑलरेडी ऑफ, जैक ग्रिलिश इज ऑन, जॉर्डन हेंडरसन वाज ऑन फॉर जूड बेलिंगहम, और अभी डेस्ट भी ऑफ है फॉर यूएसए बाय द वे। यहाँ पे येडलिन नहीं आ रहे यार, कोई और आ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये नंबर 18 कौन है? मूर है कौन? लेकिन नैशविल एफसी, ओके, आई डोंट नो, पता नहीं, राइट बैक ही होंगे शायद, आई एम गेसिंग। इंग्लैंड क्या करेगी यार टैक्टिकली? Mount. Saka. आई डोंट अग्री यार। राइट साइड कौन खेलेगा? सरप्राइजिंग नहीं, कम ऑन ब्रो, माउंट इज नॉट अ राइट विंगर। वो सेम प्रॉब्लम चेल्सी भी करती है। दे आर वांटिंग टू गो 4-2-4, ठीक है, बट माउंट इज नॉट अ राइट विंगर। I don't know what they're trying. नहीं तो हो सकता है, ओके, लेट मी एक्चुअली पुल इट अप अगेन, Maybe a 4-3-3, who knows? हाँ एग्जैक्टली, विन Rashford. So you have Grealish, Rashford can play off the right hand side, right? In a 4-3-3 at least. वही कर रहा है। So Rashford playing off the right hand side. I don't agree with this, यार। Foden, when you have, why won't you get a Foden, Chinmay?
For who though? For who? मतलब he is Kane. more naturally right sided. Yeah, true. I think with the pace. मैं तो बोलता हूँ for Mount यार. Plan B होता ना. Could have gone for 10 minutes to go. Let's see. Maybe for Saka itself. I think pace. Indian goal. I think pace and Rashford direct है थोड़ा more than foreign at least. हाँ यार विशाल काफी अच्छा मैकेनी ने बहुत he ran his socks off brilliantly bro. Tyler Adams as well. Again, like I said, bhai, they have players. Tyler Adams, you have seen him in Europe as well as for Leeds. He's that guy. Grealish foul. Oh, अच्छी खासी लड़ाई. पता नहीं यार. आई थिंक इस बॉल में अगर मैडिसन फिट होता तो मे बी मैडिसन आता माउंट की जगह सेट पीसेस के लिए स्पेशली. You know what? USA has never lost to England. That's one more thing, right? In a World Cup, okay. But जो भी है, मतलब that's what counts, right? Into talking England USA. I can't not win 0-0. Please. That is all. ओहो, मगवायर ओपी और उसको आ गया है भाई यहाँ पर एक पुल लग रहा है. पुल लग रहा है. The second he dived, इसने हाथ But लगाना it's not चालू. cramp, it's a groin. I'm guessing anyway. Probably having the worst day against England. नहीं, England also very good यार. It's also like आपकी opposition क्या करती है ना, tactically USA have done well. Like विशाल आपने बोला जो midfield ने किया ना USA का, तो I think it's about just not letting them play with the ball as much. Selective pressing अच्छे से किया है उन्होंने. चलो अभी वापस से क्लियर कर दिया है. मैं ना टाइलर एडम्स को पहचान नहीं रहा था पूरे गेम में. मुझे क्यों नहीं पहचान रहा यार भाई. मैं देख तो रहा हूँ उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा है, नंबर दिख रहा है उसका जर्सी का. मैं रियलाइज किया टाइलर एडम्स हैज चेंज हिज हेयर स्टाइल ब्रो. मैं तब से सोचा था टाइलर एडम्स, मैं बुला रहा था. आई वाज कॉलिंग मैकेनी हिम. क्या हीरो बॉल ट्राई कर रहा है, I don't know. अरे यार. And Kane is down. I don't know. Is Kane down? I hope he's up. Yeah, 6 goals बहुत ज्यादा है. No, I hear you. They lost it defensively. और again, you have to give it to them. ईरान में जो problems चल रहे हैं ना with the women and everything. और of course, they didn't sing the national anthem in the first game or second game. They did sing, but they must be going through a lot of political pressure. तो them coming back and winning, मैं तो बोलूँगा maybe वो भी चल रहा था उनके मन में. विशाल याद है तो मैच के just पहले lot of things happened in the before the England game. Not singing the national anthem, वो भी हो सकता है कभी कहीं ना कहीं. Focus. आज they looked much more focused and of course यार आज थोड़ा do or die match भी था. It was a direct 6-pointer and they won it. Quite deservedly in my opinion. My Wales man. With all due respect to Gareth Bale and you know what क्या हुआ था ना चिन्मय, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ था वेल्स और ईरान के मैच में. मैं देख रहा था मैच कुछ 65-70 मिनट्स होते. एनीवन हु वॉच दैट मैच टेल मी, आप लोग भी अगर सुने थे ये बात. Commentator went mad, bro. Oh man, this is a big substitution for Wales. It's a huge substitution. You can change the things. And you know who came on? Who? Joe Allen. A finished Joe Allen. I can't believe that. And that's what Wales is, what it is. Right? Timothy Weah is out. And George Sargent and Giovanni Reina, sorry. Claudio Reina तो खुद प्लेयर हुआ करते थे यार. लेकिन हाँ, ये क्लाउडियो रेना के रिलेटिव है क्या जियोवानी रेना? अब उसको दिखाया है, I don't know. No, Giovanni Simeone is Diego Simeone's son, but I think let me just see. थोड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रहा हूँ. Yes, bro, I'm correct. Giovanni is the son of former Rangers, Sunderland, Man City, New York Red Bulls and United States player Claudio Reyna. भाई मैंने क्लाउडियो रेना को भी देखा है भाई. आई एम फीलिंग ओल्ड all of a sudden. कोई नहीं. यूएस टीम में यू न्यू सर्टेन नेम्स ना हमेशा रहते थे. माइक ब्रैडली, वाज इट माइकल ब्रैडली?
Was he the guy? एक और I've heard of मिडफील्डर भी था यूएस में. टोरंटो एफसी में I watched MLS, right? So where I used to watch a lot of these guys playing. सानिया को देखा है मैंने live. He used to They play had there. this Landon Donovan, एक था. हाँ, लैंडन डोनोवन वाज अ कल्ट प्लेयर यार, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था वो. उसी वो एंड क्लिन डेम्सी वर इन दैट सेम एरा ऑलमोस्ट. इनफैक्ट दे यूज्ड टू प्ले इन अ सिमिलर पोजीशन आल्सो, इसलिए डोनोवन यूज्ड टू नॉट गेट अ लॉट ऑफ स्टार्ट्स. वो कंट्रोवर्शियल था बहुत यूएसए में. वो लेफ्टिश जो पुलिसिक खेलते हैं ना, वही. Well on Wales after shot a free kick now. I really think भाई वेल्स काफी डिसअपॉइंट किया यार ऑनेस्टली. दैट परफॉर्मेंस एक टैक्टिक भी बहुत ही, जैसे सर्बिया का मैं लास्ट बोल रहा था ना रात को कि नेगेटिव थी, बट ऑनेस्टली सर्बिया हैड इंजरीज, वेल्स हैड व्हाट बहान, आई डोंट नो भाई. यहाँ पर डिफेंड किया है यूएसए ने अच्छे से. गिर गए बोले से. Let me see. If you have to sum it up, no, this performance in like one line, man, what would you say? What would you be as an England fan? Deep snooze fest, as you said. Snooze fest. I feel No, like. but in terms of tactics performance, yeah, what? I think they both somehow, I don't know, quality aside, they both matched each other. Like देखो, tactically. I know that low block रखना is a thing that is difficult to kind of go against, and selective pressing is not easy to read. भी साथ साथ में क्या नहीं बोलोगे? This match was crying out for a Phil Foden, bro. मेरे ख्याल से तो. You need those silky touches and someone who runs off the defender. Phil Foden does that. Against, you know why I'm saying? तब लोग याद होगा Atletico Madrid वाला match last season Champions League. Yeah. Phil Foden got the assist coming on. Remember? Yeah. De Bruyne ने मारा था गोल. Yeah. वो वाला मोमेंट मैं बोल रहा हूँ. तो वैसे Phil Foden has it in him. As much as मैं तो बोलता हूँ यार, Saka and Mount have been very good, but he needed to have come on earlier. Derain, again, much love to you, bro. Wales played their first World Cup after 64 years, right? I thought it's the first World Cup ever. नहीं है क्या? At least मैं मुझे तो याद ही नहीं है मेरे लाइफ में वेल्स को देखते हुए. I think so too. I'm not sure because I think ज्यादा मुझे याद है पहला ही था, क्योंकि pretty sure Gareth Bale hasn't played a World Cup. 100% sure that. तो मतलब मैं हो गया almost वही है कि यार at least 2000s में they oh, that's ball to Rash. Oh, nice ball by Kane यार. Down. Rashford क्या करेगा Rashford? अकेला पड़ गया थोड़ा ना. On. मैं देखो यही पॉइंट, अगर फोर्डन होता ना. Rashford. Oh. What is he doing, man? 4 सेकंड आगे चिन्मय. लेकिन he should have struck that ball better. Honestly, it was a chance. Proper chance था नहीं? Should have. I think Grealish with the back heel really surprised. भाई यूएसए खेल लो भाई कुछ. पुलिसिक क्या कर रहा है आके? ये जॉगिंग के लिए क्यों आया है? लुक एट पुलिसिक पीपल. लेफ्ट फॉरवर्ड से जॉग करने आया है सेंटर बैक पोजीशन में. आई थिंक आकर कुछ मैसेज दिया है कान में. आई हैव अ फीलिंग ही सेड समथिंग. गाइस कम ऑन, गेट द बॉल मूविंग ब्रो, गेट द बॉल मूविंग मेट. नहीं क्या बोलते हैं यूएसए वाले, जो भी बोलते हैं. ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं. That is English. Man. अच्छा ट्राई था. Ball. Kane, come on. नहीं यार, अभी कहाँ भागेगा. Not a right move. He should have played to his feet. Kane is not that kind of a player, is he? Rashford उस सेकंड में होता तो you can understand. क्या प्रेस कर रहा है यार. भाई जो भी लोग गाली देते हैं ना इस बंदे को, देख लो भाई. इट इज 89th मिनट ऑफ द गेम. हम गेम देख रहे हैं फिर भी हमें लग रहा है भाई क्या हो रहा है भाई, हम लेजी हो रहे हैं. दैट इज मेसन माउंट फॉर यू. भाई मेसन माउंट गिव्स इट
100% in whatever jersey he plays. And that press could have resulted to something, you never know, right? Keeper nearly gave it away, right? So I mean, that's what you want. Pressing And make people say causes- USA. I think विशाल it's also about form, right? I think एक चीज था, USA खुद transition state में थी last 1-2 साल से, plus काफी सारे controversies होते हैं USA फुटबॉल में भी, plus you know they don't play like top teams के लिए the main guys, they're not the main guys, you know, like for example Pulisic is there but he's not your, you know, first, second, third name on your team sheet. Tyler Adams बहुत अच्छे है but is he the first name on the team sheet of Leeds? नहीं. Same thing you can say about McKennie and Juventus, right? You know, a lot of players, Timothy Villa and Lille maybe, they're not the first name on the team sheet. तो इसलिए people are not expecting. Turner is the second choice goalkeeper of Arsenal. है players है यार, ऐसे नहीं है players नहीं है. और again it comes down to the day how they do. तो आज अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उनका फॉर्म एक्चुअली बढ़िया नहीं रहा है इतना. बट देयर आर ऑलवेज अ टीम व्हिच काइंड ऑफ गिव्स देयर 100%. ये हमेशा मानना पड़ेगा यूएसए के लिए. बहुत कम टीम्स देखा यूएसए के लिए में जो हाई एनर्जी नहीं है, यू नो, टीम स्पिरिट नहीं है. दैट आई मस्ट से द यूएसए सेटअप हैज बीन इंप्रेसिव. पुलिसिक विद अ फाउल, आई थिंक येलो कार्ड का अपील था लेकिन हुआ नहीं कुछ. आई थिंक पुलिसिक इज हैप्पी विद अ पॉइंट बीइंग अ कैप्टन. इट सीम्स लाइक दैट टू मी. Because he seems to be defending more than attacking in the last 10 minutes. Defending more, exactly. I'm checking out the stats, exactly. I'm checking out the stats right now from the game, and I honestly feel, you know, Twitter's exploding. All English communities, you know, as I can see, is exploding with the simple thing is why they cannot break down the US national team. I mean, you've got likes of Jim Begley and other people tweeting out right now, and they're all saying the same thing, that they really England really needed a result tonight. Why give this chance to another team? You know, I don't know. चलो भाई देखते हैं. Again, things can get tastier in the group यार. It's on corner duty. एक तो यार ट्रिपियर मुझे दिखा नहीं है मैच में, पता नहीं मैं दूसरा मैच देख रहा हूँ क्या. True. Catching practice. Not a bad thing, but not a good thing too. Of course, police did, you know, manage to wriggle away from him. So हाँ वो रीजन है यार, मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ. मतलब आर्ग्यूबली आई डोंट नो, पीपल क्रिएटिविटी एक होता है ना, एक जस्ट गेट द बॉल इन द बॉक्स वाला चीज. आर्ग्यूबली ट्रेंट इज एक्चुअली बेटर इन दैट, ओनली इन दैट एक, you know, area for sure, like no, not even. But I think exactly in a game like this, maybe you might have wanted that for the last 5 minutes, right? वही मैं बोल रहा ना, देखो in this game it was, I think it was personally वो risk, I know 1 point lose हो जाता, it would have been not great as well. They've given it away. Okay, Grealish taking, I have a feeling in this कुछ होने वाला Why? है, लेकिन That's a foul. अकेला है भाई. Come on, don't cheat. फ्री किक भाई. ग्रिलिश वर्ल्ड कप आया है भाई फ्री किक जीतने, गोल मारने नहीं. What do you think? Was it right? He could have just played the guy in, right, in between. Yeah, I mean, Mason Mount था. Shawberto Carlos, come on. Shaw putting a cross. Let's see क्या करने वाले भाई Shaw भाई साहब. Okay, Shaw. आज कौन से मैचेस है? एक तो रात को फ्रांस का भी मैच है ना. Tunisia, Australia, France है, Argentina, Mexico and Poland. भाई आज सब लोग जो भी देख रहे हैं यार, जो भी देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वाचिंग. हम करने वाले 2 वॉच अलोंग कल वापस. आज फ्रांस वाला और अर्जेंटीना वाला आज करने वाले हैं, ठीक है. और होपफुली एक वीडियो भी आए उससे पहले, अगर मेरी शक्ति रही तो, जो अभी तक तो है लेकिन. Shaw, come on, do it. Oh! What a chance! Was it Harry Kane? Harry Kane. तो भाई दोनों टीम्स के पास चांसेस बने हैं यार. मतलब आई नो Pulisic hit the bar and all that, and he should have done better with the header. Arguably, I would say Harry Kane का ये chance was a miss. Knowing Harry Kane should have at least worked the goalkeeper. At the end of it, I feel England still get away with a draw. They have 4 points. So you're okay. जैसे मैं I'm like
as much as I was pissed with Netherlands, not getting 3 points, somewhere down the Luckily, line मुझे लगा था कि it's the point okay of considering Wales the game. being so, मतलब वेल्स ने खुद ही के लिए इतना डिफिकल्ट बना लिया है अब कि I might be, अगर वेल्स आज जीत जाती तो शायद मैं टेंशन में रहता, बट वेल्स ने खुद ही के लिए इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि I think at least that game could be a little bit But third game भाई वेल्स के साथ है. Wales England, everyone knows there is a rivalry as much history, as and Bale scored in the Euro the last time, the that's last what time I'm we saying. played. तो मुझे लगता है ना, मतलब एक पॉइंट प्रूव वाला चीज होगा यार. अगेन 4 पॉइंट्स के साथ इमेजिन, और रिमेंबर इट्स नॉट जस्ट दैट इंग्लैंड ऑन 4 पॉइंट्स, वेल्स ऑन 4 पॉइंट्स. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन. Goal, this thing, no goal difference. गोल डिफरेंस, हाँ, लेकिन मतलब आई एम जस्ट सेइंग वाइल्ड वाला बोल रहा हूँ मैं. व्हाई नॉट? आई नो बहुत ज्यादा इट विल बी टू गुड टू बी ट्रू फॉर वेल्स. आज ऐसा हो गया कि now I feel today's one night when I could have slept early and gotten ready for the next 4-5 अरे days. नहीं यार, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन यार. नहीं, इमेजिन मेरा क्या होता अकेले, हो गया और full बाकी लोग time. भी स्ट्रीम में बड़े जो है यार. Beautiful. England चलो four मैन, में 1 the match of the tournament ends, man. What a superb match that was, भाई. I have not watched such a good match in my life. ऐसा tactical मैच मैं masterclass. होप कि कभी देखूं भी नहीं. Tactical But masterclass. thanks to Chinmay and thanks to everyone in the chat, you guys made it very well for us. I don't know, Chinmay, quickly if you have to sum it up here. I know snooze fest तो सब बता दिए, लेकिन honestly on a serious note, I know it's what 4 points of England versus 2 points of USA. Abhi bhi Yeah. technically England has gone forward because Iran has 3 points. But in terms of the gameplay, in terms of the substitutions, what do you think exactly went wrong for England? Yeah. You're right. Game was calling for a Foden. Maybe Trent ka bhi you could have introduced in the last 5-10 minutes. And so I honestly think today, in a long time, I feel today was a game where I didn't see a lot of Harry Kane. And a lot of people are not noticing this fact. But Kane, even when he doesn't score, even when he scores, he's always been a big presence for England. Today was one game when actually I felt Kane was a little bit below average. First time in a long time, actually, I've seen him, that way for England when he's not turned up. And with that header in the last second, I think Kane would have already. Kane might have done that. I will only say England owes me 94 minutes of my life. They owe me 94 minutes of my life, and I hope they can get back. They can get back against Wales and probably win us the game and win us the group. लेकिन यार उससे पहले भाई, मैन ऑफ द मैच ये वेबसाइट तो शॉक को दे रही है. पता नहीं भाई, मतलब मैं तो बोलूंगा पुलिसिक विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. Pulisic deserves it, or maybe even for that matter, I don't know about the ratings and all. McKennie had a good game. McKennie had a good game. In लेकिन fact, वो मिसेस, आई थिंक मैकेनी मिस्ड वर्सेस पुलिसिक क्रिएटेड. I would say अगर इंग्लैंड से किसी को देना है, no bias, Maguire and even Mount. They did quite a bit of graft. Actually, yeah, Mount actually did well. Imagine the situation जहाँ पर वो लोग concede कर देते यार. Mount actually helped there as well, and again a lot of people did. But I know Pulisic man of the match, Messi is good बोल रहे हैं, Maguire बोल रहे हैं, okay, interesting. Vijay, good night as well. भाई सब लोग do not forget to like the stream. I would really appreciate if you can like the stream or get us to भाई मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम likes है वो यार. भाई I know that Snooze Fest था at some point. We all would agree that थोड़ा सा USA ने भी दिया है तो कंट्रीब्यूशन वहां पर, बिकॉज दे प्लेड दैट गेम जहां पर बहुत ही सिलेक्टिव प्रेसिंग किए वो लोग, एंड दे वर सिटिंग बैक एट इन मोमेंट्स. बट अगेन टॉकिंग अबाउट मैकेनी, आई थिंक ऑनेस्टली हु हैड द बेटर चांसेस, आई वुड से यूएसए हैड द बेटर चांसेस. आई डोंट थिंक वो आर्ग्यू भी कर सकते. मैकेनी का एक सिटर था इन द फर्स्ट हाफ, पुलिसिक हिट द क्रॉस बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन केन लास्ट मोमेंट में जो हेडर था, वाओ व्हाट अ चांस. माउंट का एक अच्छा शॉट था, अगेन नॉट अ रियली चांस. Kane could have scored that, and I feel Kane would have scored that 8 times out of 10, 9 times out of 10 for England. I maybe just told you the kind of game he was having today. USA won my heart today, पुदिन बोल रहे हैं. अरे भाई हार्ट तो ले लिया भाई, नींद भी ले लिया ना साथ साथ में. नींद चुराया मैंने वाला कॉपीराइट हो जाएगी. गाय इतना अच्छा गाता नहीं हूँ भाई. केन शुड हैव स्कोर्ड. श्रेय बिल्कुल भाई, श्रेय को बिग अप होया, मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. पुदिन आल्सो भाई, सब लोग जो बने हुए ना, मच थैंक्स फॉर यू ऑल टू बी हियर. सुबह ये क्या है, जा रहा हूँ पढ़ने. अरे भाई ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट. पढ़ो अच्छे से पढ़ो. और
डेफिनेटली फुटबॉल की बातें भी हम करेंगे कल. बाय द वे, यस, वी आर होपिंग एवरीवन, जो भी देख रहा है भाई सब लोग लाइक कर दिए. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. यस, चिन्मय का भी लिंक डालूंगा भाई. चिन्मय, प्रेडिक्शन हो जाए यार अब जाते जाते. मैन ऑफ द मैच हो गया, चलो स्नूज फेस्ट हो गया, व्हाट नॉट हो गया भाई. प्रेडिक्शन क्या लग रहा है भाई ऑन दिस परफॉर्मेंस? मैं खुद बोला था, आज ही मैंने पोल डाला है जहां तक मुझे याद है, कि विच वाज द मोस्ट इंप्रेसिव टीम इन दैट फर्स्ट राउंड. इंग्लैंड वाज राइट अप देयर अगेंस्ट ईरान, लेट्स बी ऑनेस्ट. कंसिडरिंग नाउ बोथ द परफॉर्मेंसेस भाई, आप वेयर वुड यू रेट इंग्लैंड एज एन इंग्लैंड फैन? मतलब फॉर वन मिनट, डोंट थिंक एज एन इंग्लैंड फैन, आप बोलिए. Are you not pissed? मैं actually I would have been pissed off that Southgate hasn't used his bench well आज. I would be that when you have a Trent, when you have a Foden, आप उनको use नहीं कर रहे हो. When you already are seeing that your A game players are not in the A game, तो I think Southgate is still a problem. Was it like एक बोलते हैं ना ईरान वाला मैच, they kind of opened up, but I think वो एक flash in the pan हो सकता है. What do you think? Let's see. I think Southgate, the thing you're saying with the substitutions, yeah, you're right. Foden could have been bought on. Trent could have been bought on. Rashford could have been bought on earlier. There were a couple of players who else, Callum Wilson could have been bought on other Kane if Kane was not really, firing. I think they could have been changed. Or even last minute, Rashford, like you have seen Rashford. Is he more comfortable on the right hand side or left hand side? Pretty much sure. Left or up top, right? Correct. He's not that kind of player who's really that comfortable, right? So it was all the more reason to get Foden, right? Foden, unless he's and injured. on left foot could have produced a beauty. True. But I feel, again, too quick to praise when they beat them 6-2. Too quick to criticize when you've had a 0 draw. I think we should give it time. The same group of players had an amazing week last week, had an amazing game last week. They have Wales to go. I feel they'll only, acha if there is this slump or if there is this result, acha it's happened early in the tournament so they can come back from it. Yeah. Again, for people asking about the group predictions, for these two groups जहाँ पर हमने देखे आज matches, देखिए Netherlands, you all know by I reacted on the other stream, मैं detail में नहीं जाऊँगा. और by the way, I'll try and put a video as well, छोटा सा, in the morning you can check it out. But I feel that I still feel that Netherlands are good for Qatar. वो अलग बात है, Qatar have a great chance to try and prove something before they obviously formally exit. अब तो technically exit हो गए already. Yes, Qatar cannot qualify after Netherlands ने एक point लिया, ठीक है? They cannot. It's not even mathematically possible अभी. लेकिन I would still say Netherlands on top, and it will be a 6-pointer between Ecuador and Senegal. And I'm saying, considering आज का match, as much as Senegal were also good in both the matches, I have a feeling about Ecuador. I think Ecuador probably, arguably, kind of deserve it more. मैं जा रहा हूँ Ecuador. Ener Valencia, point to prove. It would have been so much fun. But he's injured, right? Yeah, देखते. he did. Yeah, he got injured near the end. लेकिन वो अब देखते. I have said that वो injury was not really injury. He was doing gamesmanship. I might be wrong. I know बहुत controversial statement It would है. have been so much fun. But Mane was there. Group B में बोलिए यार, मतलब Iran and I think if I'm not wrong, USA will have literally a showdown. Or I don't know, man. Actually all four can qualify, honestly. But I think Wales की बात वैसी हो जाती है, they'll have to win by 5 goals if I'm not wrong. Exactly, Wales can still qualify, so technically England have not qualified. But I was expecting more points in this group, यार. मतलब but England can still come second. वो हो सकता है. Why not? Wales has beaten England recently, so why not, right? England can still come second. Remember, Iran और USA का अगर draw होता है, then Iran are on 4 and goal difference England का better है, तो they will kind of go through. But if Iran gets a victory or a USA gets a victory, they will be either on 5 or 6 points. Versus अगर England अगर 1 point लेती, they might be only on 5 points. So अभी भी यार, it's up for grabs in terms of the positions. Wales, they can, but chances are less. I will still go with, personally, I don't know, Chinmay, you're going with Iran and England or USA and England? I'd go for USA. I think I'd go for USA. The way they held them today, it shows they have grit, have discipline, and I think England. Interesting. भाई ईरान मैं चाहूंगा as an Asian team, but again USA not too bad. The energy लाएगी यहाँ पर, क्वालिफाई जरूर करेगी, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में थोड़ा डाउट है अभी. वेल्स कैन, थोड़ा हो सकता है, दुश्मनी भी वहां पर. और यहाँ पर आप जो पूछ रहे हो, यहाँ पर देखिए, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, तो मतलब सब लोग को देखने के लिए है. दैट मीन्स दैट आप पर निर्भर है. अगर हमारी चैट ज्यादा हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है और हमारे पैनल वो है, हम करते हैं हिंदी या उर्दू में ज्यादा. लेकिन अगर है मिक्स्ड, वी काइंड ऑफ डू इंग्लिश, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट?
लेकिन ज्यादातर हिंदी में रहता है. We kind of mix both at times. Definitely English audience is very much welcome. We talk the language of football. And हमारा दूसरा चैनल भी Almighty Sports Plus. भाई माउंट का फिनिशिंग इज ग्रेट, pressing top notch, passing is great, placement is great, work rate is top notch, but still उसको इतना hate क्यों मिलता है? What is still missing in him? चिन्मय यू टेल यार, मेरा थोड़ा बायस लगे, आप बोलो इसका आंसर प्लीज. With Mount, I honestly don't understand why. I'm not even joking. I've been a big supporter of Mount because I feel he is one of those players who can do anything with a team. Team player एक होता है. I'm not comparing styles of play. Don't get me wrong. But इस हालत में एक Wayne Rooney होता है. You know, he can do anything for the team. He can run back and score. Okay, Same with Mason Mount. You know, he took a good shot today. Just off the top of my head, he did some great running, pressed the keeper. He did, अरे 89th 90th minute में याद है the run that he made. Just tells you, you know. Exactly. You know, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा. I'm not going to try and say that यार Mount जैसा एनर्जी is something great. और मैं I know मैं हंस रहा था जो एलन पर. देखिए वही डिफरेंस है. माउंट एक्चुअली हैज द स्किल्स, द काइंड ऑफ गोल्स दैट इज गॉट, द काइंड ऑफ एसेट्स इज गॉट, ही हैज द थिंग्स. लेकिन माउंट ऐसा प्लेयर नहीं जिस पर यू बिल्ड द टीम. तो वहां पर चेल्सी गलती कर रही है. चेल्सी आर ट्राइंग टू बिल्ड द टीम अराउंड माउंट. ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय. He's not him. He's not In this fact, Frank you've Lampard. got a Pulisic. In fact, you've got a Pulisic who you can actually do that with, who actually And he tries to- wants, वो चाहता भी है कि वैसा हो, You know, he it's wants like that importance. you want to make someone. You've got a guy like that, but you try to make someone else, you know, the main hero. I mean, तो माउंट इज योर एक नंबर, टिपिकल नंबर 8. आई डोंट थिंक इज अ नंबर 10. वहां पर वही इशू आ रहा है क्योंकि वो नंबर 10 में खेल रहा है ना इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन. यू एक्सपेक्ट कि ज्यादा करे. आप बोल रहे हो भाई फोर्डन को लाओ एक्सेट्रा. भाई ही इज नॉट अ नंबर 10. वो एक नंबर 8 है. ही कैन प्ले नंबर 10. वो ही कैन प्ले नंबर 6. ही इज द नंबर 8. दैट्स व्हाट वो करता है, जो बेसिकली 4-3-3 बेस्ट पोजीशन है उसके लिए ऑन द लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर. एस्टोपिनियन स्टैंड आउट फॉर इक्वाडोर. यार एग्जैक्टली भाई वो मैच तो मैं ज्यादा याद करना नहीं चाहता हूँ. बट एवरीडे लाइव भाई पुदेन, अंश, गुल, मटाटा यूनाइटेड, चिन्मय ऑफ कोर्स, भाई आदित्य, श्रेय पाटिल, ओनी, गौरव. मैं स्पेशल शॉट आउट दे रहा हूँ. मेसी इज गोट, शुभ, विजय, विशाल, डेरेन ऑफ कोर्स मेरे भाई यार. बहुत लोग हैं. आशीष ऑफ कोर्स, ईशान भाई, सब लोग को बड़ा बड़ा शाउट आउट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पर भाई 2:45 बजे सुबह के. प्रीटी श्योर आप लोग में से बहुत लोग इंडिया में हो. एंड अगेन अगर बाकी जगह से भी, जोहेब, प्रोफेसर यूनाइटेड, लॉट ऑफ पीपल है बाकी जगह से भी भाई, बिग अप. वी ऑलवेज इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. यस मैं चेल्सी फैन हूँ. यू नो चिन्मय इज अ यूनाइटेड फैन. लेकिन हम बात करते हैं एंड टू एंड. यू नो दैट बिकॉज मैं तो फुटबॉल हमने देखा यार इतना, जस्ट टू काइंड ऑफ यू नो डिस्कसिंग एंड वी ऑलवेज लव इट. बिल्कुल just saw Chelsea tonight. Matata United also by big up with all the pun. I know what you're saying. भाई लेकिन Southgate, I think he didn't pick the right one. जैसे Louis van Gaal ने mistake किया था in terms of substitutions. So that's what I would say. नहीं खेलती चेल्सी. खेलना चाहिए. एंचेलोटी के बाद में चेल्सी नहीं खेला. अंश बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे आपके. बट यू नो व्हाट इट इज. बट अगेन मच लव टू एवरीवन भाई. अगेन मैंने शाउट आउट दे दिया सब लोग को. मैन ऑफ द मैच भी बोल दिया. हमने डिस्कस किया था नेदरलैंड्स के बारे में बहुत टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट स्ट्रीम. और अगर स्ट्रीम मिस कर दो तो चेक करिए. हमने एनीवे एक वीडियो करना है सुबह. हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. अगेन भाई लाइक्स काफी कम हुए फॉर द नंबर ऑफ व्यूज यू गॉट. ज्यादा टारगेट नहीं है. सब लोग लाइक करके सोना यार. अच्छा आपको सपना आएगा और अच्छा दिन जाएगा. इतना बोलता हूँ. टॉकिंग अबाउट दिन, विल बी बैक अगेन नॉट ओनली विद अ वीडियो बट रिव्यूइंग द एंटायर डे. बट ऑल्सो हमने करना है फ्रांस का मैच और अर्जेंटीना का मैच. भाई दैट इज सम क्रेजीनेस. तो विल बी बैक एज ऑलवेज. चिन्मय अगेन यू आर इनवाइटेड. अगर आप फ्री हो, नहीं भी हो तो भाई वी विल ऑलवेज गो अलोंग. यू नो द फुटबॉल मस्ट गो ऑन. वो है द बॉटम लाइन. कंग्रेचुलेशंस टू इक्वाडोर. मैं बोलूंगा यू नो दिल पर पत्थर रखकर. अभी के लिए हुआ नहीं फुल कंग्रेचुलेशंस टू यूएसए बिकॉज अभी भी अच्छा चांस है. ईरान बहुत व्हाट अ डे दे हैड हिस्टोरिकली भाई कंसीडरिंग जो हो रहा है. एंड आई डोंट नो मैन ऑफ कोर्स सेनेगल यू वुड से दैट दे आर आल्सो इन विद अ गुड शाउट. माउंट से ज्यादा तो सर जी आपका वर्क रेट है. अरे भाई साहब भाई दिस इज द कमेंट ऑफ द डे यार. अंश क्या ही बोलूं. चिन्मय भाई इससे बेटर कमेंट क्या ही तो मिलेगा टू एंड द डे. भाई आई कुड हैव एंडेड इन अ मच मोर inspirational note for me, Ansh. यार brilliant. That's a brilliant comment. I love that comment, bro. Much love to everyone and of course Chinmay, big shout out आपको absolutely यार. मिलते हैं यार next week. Chinmay hopefully will be back when we have our old panel back as well. लेकिन meanwhile also you're invited and good night to everyone. अभी के लिए इतना ही भाई. चलो कोई नहीं, snooze fest होते
it's only group stages. Don't worry, teams will play well and much better football मिलेगा जो मिला था कुछ मैचेस में आज. See you, bye.